All right, so those who are present online. So far we had discussion on three areas. The first week we have discussed about what is single board computer. Even now also several students have this doubt, like our volunteers also expressing when they speak to this some registered participant, right? There are in the group there are 1,000 students, but actually only some around some 70-80 people are attending regularly lectures. The still people are confused, right, about is it meant for them or whatever. People think am I talking about electronics or something. Okay, it's a big problem. So again, I appeal, you refer to my first video, first section video. Those who are upset clearly said that what is the difference between a computer and a single board computer. It's not about electronics. It's not about any circuits or nothing. It's about software, hardware partition. Okay. So software and hardware is there in computer, but then that's there for almost 40, 50 years. But this generation, that is particularly this last decade, the amount of applications in software and hardware is much, much higher than the computer, right? That's what you have seen the business models in particularly mobile phones or mobile-based applications. Now it has reached to even a simple your door locks or LED bulbs to driverless cars, drones, right? Or in defense sector, you all know the trillions, not even billions, trillions of dollars is invested in AI inbuilt, missile guided systems or whatnot, all destructive things. Similarly, in healthcare sector, we have seen in COVID period also we have seen lot of devices or mobile-based applications for tracking the people or tracking the patients or detecting some abnormalities within the patients without doctor's intervention and so on. So, and now also you see even the companies from NVIDIA and those big shots who are into artificial intelligence, but then that AI based things which they were doing for computers, but now they are majorly into AI based chips. Right? Last week he was in India negotiating to invest in India to manufacture those AI based computational devices. So whatever you see for years that software means in computer, it's no more in computer. It is you will find a good number of applications other than computer. But then terminology is same, right? It's not that I'm talking about something new subject. Whatever we talk about the CPU, memory, peripherals, operating system, compilers, the language is same, but it's not computer. That's the biggest problem, right? If it is computer, then what happens? You can make a lot of assumptions, right? Because the computer is not designed by you. Computer is a standard system. Some one or two companies are manufacturing, and we are only using that, right? We don't do some, select some chips and solder it or something application specific. Nothing. No, entire world. Laptop means only this. Wherever you go, computer means that. You go anywhere in the world. But however, like I said, last 2 weeks I am trying to say that if you look at other than that, there is no standard at all. Every country, every company has their own policies and they discontinue. They come up with new chips, new technologies every time. So it's a different business model. So that's why we don't insist that I want Intel only, I want Microsoft only, I want IBM only when it comes to mobile phone or any products. Right? When you buy a four-wheeler, does anybody advertise the Intel inside or Microsoft inside? It's such an expensive car, right? 10, 15 lakhs. But nobody advertises. Does Tesla is advertising Intel inside? No, no.
So it happens only for desktop and computer, nowhere else. That's why we need to understand that the compilers, controllers are not just in computers. There are hundreds and thousands of controllers other than computers. So that's why I'm saying ki people are becoming handicapped, right? People are thinking that software computer means only in computer. So then what happens? You're becoming a helpless fellow because you don't understand the other software and hardware applications. Then you are like a some BSc guy, BCom fellow who understands one or two languages. He can write some script. You are also doing the same thing. You are not developing the software and hardware for a specific application, right? Hardware and software is a general purpose system. This is definitely not engineering. Okay, so that we need to understand. So for us, single board computer means this. Okay, like you people are at least so far from SNDT, we have some 25 girls have soldered these boards. They have their own hardware. Now from SPIT and some other colleges, we have this type, some 30 plus students. Out of, I got 1,000 registrations, but I would say SNDT is doing much better because entire batch of 25, they came and they did it. They enrolled and they're doing. But from SPIT, we have 500 plus students, and entire India, we could get another 500, so 1,000. But out of that, we could get only 30 students. So anyhow, once again, it's my duty to appeal, to understand. Again, I told my volunteers also, just have a communication with them, at least have a one call that what is that you think that you have shown interest, but you are not attending or doing the things. So is there any confusion? So I want to understand because that will be a feedback for me also, so that no, if at all if we need to add some more things, we will do it in this course. All right. So with this brief background and feedback, what we have started is that first week I said that computer and compilers, CPU, whatever we have traditionally, we call that still as a general purpose, non-real time system. However, whatever is the products we see in day-to-day life, these are all real-time systems because operating system application program we only develop. So there is no question of missing the events, right? It has to do in time, natural time, not before, not after. That's what, again, if you have still doubt, you can refer my first week videos, session 1 and session 2. Then after that, we have discussed about at least the various parts or ingredients of the single board computers, right? Who are the vendors and what are the chips are available, companies are available, and what are the real-time issues and all we have discussed. Last week, I have explained you the board which I had given to you, right? All of you have soldered that board. Some of you are still doing that. So that I explained that how we have designed, right? Because finally, this is about designing of our own system. Okay. So I thought since you are blindly soldering without knowing which component is there, what purpose the component is there, I thought first let me explain you. That was the last week's session. And again, you can go through my video that why we have chosen which component, right? Today, I mean, you all must be wondering why I'm not starting directly the lab and software. Don't be directly jump, right? Then again, otherwise then you are just a programmer. You are not an engineer. Okay, so we need to complete the engineering things. So today, what we will be discussing is about just an introduction about engineering problem statements, maybe 5 minutes. I don't talk much about it, but otherwise we'll actually talk about the embedded C, but majorly as a structure, not directly jump into C, as a structure. Okay. Some of the participants, even in this group also, we have third year students also there in this group, final year students also there. Those who are doing my course on minors in IoT, right? We have some 15 students from SPIT, 10 students from SPC. I also ask them to attend this program every week. The reason is, they have
specialization in IoT. For you people also in future, you have this option. Of course, it's an option for you. When you come to second year, you have an option of choosing minors in one minors program. That is your choice. You can choose IoT or you can choose some other subjects, but definitely not from your domain. That's the meaning of minors. In minors means a specialization. But for example, if a computer science student cannot do minors in computer science, okay, like that. A electronics student cannot do minors in electronics domain. The other way around. So you have an option of choosing minors in IoT or maybe some other things. So like that, we have 15 plus 10, 25 students who are currently doing in IoT. So for them also this semester, they have a course called Embedded C. So I thought it's a nice idea that they can also directly join this training program at weekend rather than weekdays attending after 4 o'clock. Okay. So why I am saying is because students who are second year, third year, final year, they already done some programming languages. So they understand what is program, right? And what is compiler and how will you write a program, compile the program, execute the. So they understand all these things. But even then, we are teaching embedded C this semester, even for third year and final year students. So that's what is my today's topic, though I'm not directly jumping to syntax of embedded C, that we have enough time. And I said to my volunteers also, it's not that I only wants to teach. We are also looking for some other experts. They also will come. They also give their own case studies or some problem statement or their own expertise. They will also will teach. What I will teach is where my expertise is there. Okay. So today what I am going to teach is that you are writing the programs for computer, but then though you might be writing for more than 2 3 years also, but still today when I am talking about programming in the computer perspective also, if I am talking, but there are some uh, important things, right, which you might have not given importance. But now when I'm explaining today, my appeal to those who are online also, those who are senior students, IoT students, don't take it lightly that as if you know. When I'm explaining something, focus only those points which I'm emphasizing. That is called sections of the program. So today's my topic majorly is about the what are the sections of a program. So that's I'm going to talk. Okay. So to begin with, what I said is right. Uh, in the all right. So in the second week, if you remember,
I stopped with this slide saying that you may be writing the programs even now also in first year also C programs, you have something like that. But what we want end of this course is that real-time programming skills and industrial coding, structured programming. So these three keywords I highlighted, that whatever you do the programming, your program has to be real-time, okay, it has to be real-time, structured programming, industrial coding, these three keywords. So I'm also looking from experts, from your seniors, alumni, industrial people, who will help me out in at least teaching what is called structured programming and industrial coding. I will focus majorly on real-time perspective because I'm a designer, so I understand more than anybody else that what do you mean by real-time software development. So this is what we have discussed a few weeks back about what is real-time software development. Now, why I am highlighting this slide once again, because I in that WhatsApp group I have shared one PPT about some engineering problem statements. Okay. Actually, these problems, all these problems are from one professor, Dr. Mukul Chandodkar. He is a very highly reputed professor at IIT Bombay, and almost computer science, IT department. Now it's not IT. Earlier there was IT department, computer science. Almost all the students take his elective. They take his elective on called this digital signal processing. Digital signal processing in power electronics applications. That was the title. It is a MTech course. Though he teaches in electrical engineering department, but I am saying, on record I am saying, entire IIT Bombay, all computer science, IT department, electronic students, all of them enroll for this course. That popular it is. So now look at the problem statements which I mailed you. These are all some mathematical equations. Okay, whatever I made. They are not simple some bubble sort algorithm or some, not those kind of a different, some other differential equation, not like that. There are some models. Some model. Okay. What is a model? Model means, now, for example, if you have a fan, now how the fan works, can you write an equation? I want an equation for a fan. So write a mathematical equation for that. Understand? How a resistor works, can you write an equation? Resistor. Simple, you have done physics, no? Already 10th level. So you write a Ohm's law, right? You have a resistor, you apply some voltage, and you find out the current. Very simple, right? I am asking you the simple things only. I am not asking anything great. I said that this, at least before, I will be teaching hardware also, peripherals also. But to begin with, when we are learning the language, first let us focus on the language. So how to learn the language? Not just only dictionary sort of a learning. I will give the problem statements, you start implementing, then you'll automatically learn the language. Isn't it? That's always encouraging, no? If you have some task, to complete the task, what I need to learn, right? For example, if you go to Germany, now you want to take some food or something, तो क्या पूरा लैंग्वेज पढ़ने के बाद खाना खाने के लिए अब थोड़ी जाएंगे यार, आप उतना ही पढ़ेंगे जो अभी होटल पे जाने के बाद हाउ टू आस्क फूड, बस यू सी ओनली दोस 3 words, say भाई आई डोंट नो व्हाट टू से, you say something. That's all, right? As simple as that. So whatever we are looking for that, what syntax is required,
what grammar is required, we learn that. That's how we learn the things. And everybody does the same thing. Okay, so that's what I was expecting. So when I said this, you all understand, last week also I said, you start with simple things only, differential equations or something. For like resistor, if you can write a equation for resistor, put it in the program, change the resistor value, change the voltage, or change the current, find the some other variable. Okay, you will do that. I am saying that what is x-axis and what is y-axis when you plot these variables. Okay, what is x-axis? No, when you plot anything on your computer screen, the x-axis, what is x-axis represents when you display anything on your computer screen? Very good. It's a time, right? At t is equal to 0, you have computed something, you display it here, but then the computation is happening, right? You didn't stop no, with one sample. Then again you calculate t is equal to plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. As the time goes, you are calculating, right? So your x-axis is your time and y-axis is amplitude of whatever the results of your this thing. Okay. Now, what is real time here? Real time here means if I say at t is equal to 0, you have got first sample. Now I will say exactly after 1 millisecond, I want the second sample. After 2 milliseconds, I want the third sample. After 4th millisecond, I want the fourth sample. After 10 milliseconds, I want the 10th sample. That is called real-time software development. Not before, not after. Okay, in time, in a natural time. Okay, my x-axis is sample number along with the timestamp, and you implement your mathematics and give me the results along with the natural time. Okay, so it's an important thing. That's why I had given you all the problems. Just I know you don't understand immediately, but you see those mathematical problems as just only maths. Their significance I will explain you later. But I am saying if you don't understand those maths, then you implement the maths you understand, like Ohm's law or charging and discharging of a capacitor or an inductor. Hello. Okay. So whatever you understand, you implement, and but what I'm saying is that whatever you implement, it has to be in this nature. There has to be a timestamp. You should know the samples. Okay. So we will discuss more about it. I know it's too early for a first year student to understand what is the real-time software development and those differential equations. But still I'm saying that nothing wrong in looking for some complicated, complex mathematics, engineering in nature, specifically as a model. Okay. Or the easiest problems. Have you seen sine wave? Can you write a mathematical expression for sine wave? Write it and show me. No. Taylor series. Taylor series, exactly. Not by using inbuilt libraries. I'm saying pure maths.
Okay. Can you, the easiest waveform equation for is sawtooth waveform. Do you understand what is sawtooth waveform? Do you know how it generates? How it is, how to generate a sawtooth waveform? No. Sawtooth means at when you say, if this is your first sample, your next sample, see this is, I told you, no? Your x-axis is always time, or you can say sample. Okay. So your first sample, let's say, is this. Plus 1 is your next sample. Plus 1 is your next sample. Is always incrementing by 1. Right? It's a counter. So if you do this, do you know actually on computer screen, if you join these dots, what you get is a sawtooth waveform. Okay. Incrementing by 1 is a sawtooth. It's called sawtooth. Saw, you know, saw वर्कशॉप में उसका टूथ कैसा रहता है, ऐसे रहते हैं. ओके. एंड दिस इज इंक्रीमेंटिंग ऑर्डर, और उसका और एक शेप रहता है डिक्रीमेंटिंग. दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल. ओके. आई एम सेइंग द मैथमेटिकल शेप्स, सिंपल square waveform, sine waveform, sawtooth waveform, triangular waveform, half sine waveform, or in your day-to-day life, whatever is you see some signals, right? Signal. Which signals you know? Any signals, tell me. Other some signals I already said. Do you tell me some signals which you know? Right? Yeah. Sorry, somebody said. Huh? No, I'm saying shape. Tell me the some shape. Okay, parabola. Okay, very good. Hexagonal, square waveform. Yeah. Rectangular. Okay. Have you seen ECG signal? Have you seen EMG signal? Like that, you know, biomedical signals. So these are all interesting, right? I'm saying, can you write a mathematical expression? That's all. Write a mathematical equation to represent these things. If you can write a waveform for sawtooth waveform, which is nothing but I is equal to I plus 1, right? And a triangular waveform, I minus 1, I plus 1 and I plus 1, you will climb that this thing, I minus 1 will decrement. Similarly, you can write a sine wave by using some Taylor series. Then why can't you write for other things also? No? You can try it, understand? So when you are writing these mathematical equations, but to begin with, that's what I said. I mean, it should have some excitement for write the equations, right? So you should write a program to generate those signals by using some mathematical equations. But I'm saying, while doing this, don't look at just some equation. I'm saying look at as a engineering perspective. Means what is your x-axis and what is your y-axis, right? Your x-axis is time and your y-axis is amplitude. Now if I say I want 20 samples, so do you understand what I mean by 20 samples? Different times. 20 samples. That's all. I am interested in only 20 samples. Okay. Or I am interested in every sample in 1 millisecond. Do you understand what I am talking? Okay.
So I'm talking about only 10th standard physics, nothing else. Do you understand frequency? Do you understand time? 1 upon f is frequency. Now, if I say that I want to generate one cycle, I want to generate one cycle. Okay. So if f is 1 upon t, okay, one cycle. So what is one cycle? For example, in your 230 volts power supply, what is the frequency of sine wave? 50 hertz. Okay. Now I am asking the same thing. Can you generate a 50 hertz signal? Simple. My omega in omega f is 50 hertz. Or in time, if I tell you, can you generate a sinusoidal signal which is of having a duration of how much in time? One upon 50, no? How much? 20 milliseconds. Okay. So if I am saying this fellow is 20 milliseconds, in frequency domain, I said 50 hertz. Or in time domain, I am saying 20 milliseconds. What is the other term I said? Samples. Now, if you want to generate this signal, okay, one cycle, in one cycle, how many samples are there? I'm interested in that. How many samples are there in one cycle? Okay. How many? Why 20? Why not 100? Why not 1000? It could be infinite also. Okay. In a signal, the amount of information is infinite, no? But can you store a infinite signal in your computer, in your hard disk, in your memory, in your pen drive? No. I do not have that much. If I'm taking a image, your image, if I'm taking, right? How much information is there? Infinite. Is it possible to hold it? No. Then what I'm doing? Finite. Finite means I'm only taking samples. Okay. What is sample? What is called that called? Very good. Pixels. Means entire image I had divided into parts. Each part is called a pixel. Now you understand that's why you buy every time new cameras, because more pixels, more resolution. Less pixels, resolution. Less resolution. Understand? So similarly, when I'm giving these engineering problem statements or mathematical models of a systems, physical systems, right? Including your day-to-day signals, okay, biomedical signals, mechanical signal, vibration, for example. Can you draw a mathematical equation how your car is vibrating? Okay, how the waveform looks like. Write the equation for that. Your mobile is vibrating, so how the signal looks like. What is the temperature of this room? Can you draw a graph? Okay, every 10 minutes take a sample. You know, not bachpan mein kiya na ye sab. I'm saying write an equation for that. But then when you write an equation, when you are solving the equation, you do not have infinite memory. Okay, you have limited memory. That's why I want only few samples. Now, if I say in this waveform, if I want 20 samples, means this entire cycle you should represent by 20. If I say I have 50, then it will be 50 samples. If I say 100, then 100 samples. Okay, understood? What do you mean by sample? What do you mean by time?
what is my frequency, what is my amplitude. So these terms are important for us because we are talking about not only just mathematics perspective, we are talking as an engineering perspective, real time, natural time. Natural time means what here? Let's say 50 hertz signal means 20 milliseconds total bit. If I tell you that, I have only 20 locations, मेरे पास 20 locations है. Memory पे I have only 20 locations. What does it mean? That means every 1 millisecond you are taking one sample because मेरे पास उतना ही capacity. Okay. If I say नहीं यार मेरे पास 20 locations नहीं, 10 locations है, अभी कम, इतना जगह नहीं है मेरे पास, तो अभी क्या हो जाएगा आपका, ये एक सैंपल स्किप करना पड़ेगा आपको. Every 2 milliseconds you take one sample, like that. ठीक है. And what is non-real time here? I say entire चीज पे what is non-real time here? Non-real time means, real time means 20 milliseconds का साइकिल जो है 20 मिलीसेकंड में जनरेट होना चाहिए. Not before, not after. Okay. Non-real time means चलो अभी 1 मिलीसेकंड हो गया, 1 सैंपल, 2 मिलीसेकंड 2 सैंपल, 20 मिलीसेकंड हो गया लेकिन आपने कंप्लीट नहीं कर पाया, आपका और टाइम लग रहा है. इसका मतलब है आपने स्किप कर दिया, आपका गाड़ी चला गया, आपका मिसाइल आपको हिट किया, या बुलेट ट्रेन का ब्रेक्स नहीं लगा, मिस हो गया. सो जो टाइम यू आर फॉलोइंग along with the sample, then it's real time. इन टाइम बट आपका सैंपल नहीं हो पाया, आपने मिस कर दिया कोई चीज को, तो क्या? ओके. ये आप एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट you understand if you are working in a stock exchange also. In financial sector, आपको मालूम है ना, ट्रांसैक्शंस वर्ल्ड वाइड, ये जो मटका झटका ये सब जो करते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग, अरे यार मुझे एक 100 शेयर खरीदना है. यू अंडरस्टैंड? अभी गोल्ड का भाव अरे बढ़ गया, या उल्टा भी हो सकता है, अरे डाउन हो रहा है, मुझे बेचना है. In a fraction of second, the entire world wants to either buy it or sell it. In a fraction of second, you also wants to book the same ticket, he also wants to book the same ticket. Do you understand what is the importance of a time? Sampling time. उसका इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है? और वो सैम्पलिंग टाइम एक जो मिस हो गया, दो चीज इंपॉर्टेंट है. एक, अगर उस टाइम पे आप नहीं कर पाए, मतलब क्या है, आपका सीट बुक नहीं हुआ और किसी को मिल गया. यू डिडंट गेट प्रेफरेंस, आपने किया बट नहीं हो पाया. वट एवर, योर कंप्यूटर स्लो हो सकता है, आपका रेस्पॉन्स स्लो हो सकता है, वट एवर, यू मिस द इवेंट. तो वही चीज आपका कार में भी हो सकता है, फ्लाइट में भी हो सकता है, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में भी, कहीं भी हो सकता है. आपने किया बट हुआ नहीं, ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. दैट इज मिसिंग इन टाइम, नहीं हो पाया. So that's why I'm saying it's not only about computing the things. I am saying the computation also has to happen in time. So that's why, even though I am giving you small mathematics to begin with, when we write the programs, I expect you, whatever you know, only you write the resistor equation, capacitor equation, or anything, or ECG signals, or whatever, biomedical signals, or vibration signals, or tsunami, earthquake signals, represent, write some equation, how they looks like. Because this is a really interesting subject, please understand. It's a fantastic subject. This course is taught at MTech level at IITs. Okay. Real-time simulation or emulation.
these systems. That means you are trying to model the behavior of a system. So वही आपको थोड़ा M.Tech level का, because when I was doing PhD that time, I was my professor's TA. Right? TA, it's not TA, it's TA, it's TA-ship. Because when you do your PhD program, you're supposed to assist your professor. So I used to give these problems to various students of M.Tech students. I mean, professor has given, but I used to do the assessment. What you are doing. So those problems of entire all engineering students used to do that. Okay, understood why I had posted those problems, but then immediately you don't understand their importance, because right now I also given some mathematical equations which are related to image processing, signal processing, such type of equations also there. So that you will understand when you go to second year, third year. But I am saying right now, what you should focus, solve the equation. Second is what? I want these three things to understand. Is it how many samples and time? These are also important for. It's not only about solving the equation, also how many samples are there and how much amount of time are you following the time, natural time. That's the meaning of real time. Okay. So time being, just only understand this much. Indirectly, you will be doing this. Indirectly, you are doing this if you try to implement that. So maybe some other lecture, I will explain you those equations. But to begin with, as I said, you implement what you understand. Okay, implement a sine waveform, triangular waveform. Right? That's also okay. No problem. Okay, so that's the thing why I had given some problems, so that you need to understand what is real-time software development environment. Okay. Okay, so today's topic is, I said, about a program. So before writing the program, let's understand at least some basics. So quickly, since majority of you are first year, let me quickly explain certain things so that you appreciate why I'm explaining these things before actually we discuss about the program. All right, so first of all, like I was saying, that a signal could be analog, a signal could be digital, right? Digital means I'm saying only samples. I have only samples, and those samples are also with a time stamp. Okay. Because I cannot accommodate analog signal because it is infinite in nature. Okay. So that's the thing where now the digital is becoming more popular. Is because if you are digital, then you can store it, you can reproduce it. All advantages are there. Okay. Today, you all know why data centers are getting more popular than a conventional television broadcasting system. Is because if it is a broadcasting system, then whatever is telecasted only you can see. But if it is a stored system, then you display, you watch as and when you want, and as many times you want, or whatever. So that's the thing where a, a, a signal which is just a broadcasted in, or a signal which is stored in a memory, and you are displaying or playing as and when you want. Okay. So we are talking about the things which are digital in nature. So in digital in nature means the simplest example is, on off means we have only two states in digital. The entire, whatever you talk,
Today, this whole world, whatever engineering applications, information, technology, whatever you are talking, everything is stored in zeros and ones. So that you should appreciate that computerization, computer is used, whatever may be the applications, management, architecture, healthcare, whatever. But information is stored in only two values, either 0 or 1. A CPU, right? A computational unit, a CPU, understands only 0 or 1. Your information could be anything. It could be graphics, it could be text or whatever. It could be civil engineering, it could be mechanical engineering, whatever you are feeding. It could be GUI based, it could be high level languages, it could be low level languages, whatever compilers. Forget about all these things. A CPU understands only 0 or 1. Okay, understood? So what we are storing in the memory, what CPU is computing, whatever, everything is only two states, either 0 or 1. That's the beauty of this subject, right? That finally you may be using touch screens, you may be using mouse pads, you may be speaking, you may be giving your image, whatever you give, whatever you are feeding, finally a CPU understands either 0 or 1. So that means finally this entire information has to be converted into zeros and ones. The numbering system is always 0 or 1. Okay? Is that clear? Okay. So please understand that. Why I am emphasizing this is because we may discuss some compilers. Somebody say Python, somebody say Java, somebody say some MATLAB, somebody say so. You talk any nonsense things. Finally, it has to come down to 0 or 1. That is called machine language. A machine, a CPU understands only either 0 or 1, binary numbers, no other things it understands. It is for our comfortness we are using all these fancy things, but CPU understands one. That means whatever you use it, in the front end, in the back end, it has to come down to 0 or 1. So like a switch, either on or off, only two states. All right, so I hope you all know these examples of switches. Like here also we have a DIP switch, right? Either on or off, only two states. Okay. So what happens when you on or off, right? That means you have two potentials. One is lower potential, other is higher potential. 0 means lower potential, 0 volts. 1 means higher potential. Some voltage is applied. The voltage could be 3.3 volts. The voltage could be 5 volts. It depends. It depends on device to device. Low state means undoubtedly 0 volts. Okay. High state means how much? 1 means how much? It depends. That's what I'm saying. It could be 5, it could be 3.3, it could be 2.5, it could be 1.2. It could be 50 volts, it could be 100 volts, it could be 1000 volts. In a bulb, low state means 0, high state means 230 volts. Right? On, off, no, two states. But in digital electronics, when we are using some gates, memories, microcontrollers, it depends on their operating voltage, whether it's a 3.3 volts, 5 volts, so whatever. So please remember, so when either we are applying 0 volts or we are applying some potential, higher potential, so two states. So don't be under the impression that always 5 volts, not necessary. In our case, the CPU which I had given to you, working on 3.3 volts. So for us, high state means 3.3 volts. It depends. So there is no guarantee always. Okay. So like I said, that don't be under the impression that always 3.3 volts or 5 volts. It could be 10 volts also. It could be 50 volts also. It could be 100 volts also. But since a digital IC cannot withstand more than 3.3 or 5 volts, so if you want to increase the voltage, what we do sometimes, we use the transistors.
So transistor as a switch. Please remember, here transistor is not an amplifier. Transistor is a switch, either on or off. On, off, only two states, either saturation stage or cutoff stage, no intermediate stage. So you can use transistor as a switch where your load, you can connect it in series. So here the voltage could be 10 volts, 50 volts, 100 volts. What you are driving by using your digital gate is transistor, and transistor is driving the motor or whatever. Understood? You may be giving 3.3 volts to transistor, but transistor is giving 10 volts, 20 volts, 50 volts to the your bulb or fan or whatever, motor, whatever. But still both of them are digital. Transistor is also a digital. Your microcontroller CPU is also digital. But voltage might not be same. Is that clear? How to drive the higher devices, right? High voltage loads. Okay. Anyhow, but still I am saying it is still digital only we are talking. Okay. Sometimes even transistor cannot withstand, though it is a high state and low state, but transistor cannot drive that. For example, air conditioner. Air conditioner, inside the air conditioner, the motor is also digital, either on or off. There is no intermediate stage. Your refrigerator, only two states, either on or off. Am I clear? Now I'm asking you a simple question. Is your washing machine is digital? No. It's a mixer because there are different modes in the Yeah. washing machine. If you clearly notice, the speed is changing. It's not that on, off. No. AC also is changing. Right? Oh, no. We select a mode, particular mode, and it goes according to it. No, it isn't. I mean, I'm really appreciate you have discussed. AC is on or off. How much time on, how much time off is a different question, but only on or off. Okay. There is no intermediate stage, right? 50% on, 20% on, 30% on. No. Let's say take a tube light, right? Tube light is what? Only two states. Okay. Fan. So, but according the washing machine also. When it Washing changes machine. Okay, let's stick to washing machine. it changes its voltage level, input voltage level. Output That's what I am saying, that when I am saying digital, okay, I have only two states. Okay. What do you mean by two states? Either on or off. Okay. Only two states. Now, in your day-to-day life, if you see some things which are behaving like this, that is digital. But I am saying, have you seen anything which is right? This is, let's say, 0%. This is 100%. Okay. Have you seen anything like this? Right? That means 10% on, 20% on, 30% on, 40%, 50%. If you have seen this, then this is not digital. No? It has many states, not two states. In digital, you have only either 0 or 1. Only two states. No intermediate stages. So your tube light has only two states. Only either on or off. But if you have a bulb, filament bulb, that can have multiple states. Have you seen sometimes bulbs का intensity हम change कर सकते हैं, but ट्यूबलाइट की intensity change कर सकता है क्या? नहीं कर सकते. ट्यूबलाइट या तो on होगा या off होगा. You cannot change the brightness of the tube light, but you can change the brightness of a bulb.
मोटर में एनालॉग होगा। नहीं, मोटर डिजिटली भी हो सकता है, एनालॉग भी हो सकता है. आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट आई एम सेइंग इफ यू लुक एट योर वॉशिंग मशीन, ठीक है, आप डिजिटल जैसा ऑपरेट कर रहे हो या एनालॉग जैसा ऑपरेट कर रहे हो? डिजिटल जैसा मतलब कैसा है? रोटेट हो रहा है, बंद हो रहा है, रोटेट हो रहा है, बंद हो रहा है, फुल स्पीड जीरो स्पीड, फुल स्पीड जीरो स्पीड, दैट इज डिजिटल. यू आर ऑपरेटिंग डिजिटल. नहीं, कभी थोड़ा धीरे धीरे घूम रहा है और थोड़ा फास्ट और फास्ट घूम रहा है, फिर थोड़ा कम हो रहा है, then that's not digital. No, your intermediate states also there. You have a lift डिजिटल स्टेट में चल रहा है वो या इंटरमीडिएट स्टेजेस है? इंटरमीडिएट स्टेज रहते हैं ना. ऐसा नहीं कि आप चढ़ गए तो झूम करके गया, फिर रुक गए, ठक करके ब्रेक लगा, नहीं ना. धीरे से वो लेके जाएगा, फिर धीरे से रुकेगा, बीच में फुल स्पीड पे जाएगा 100%. इवन लोकल ट्रेन फॉर एग्जाम्पल, फुल स्पीड भी रहता है 100% पे, जीरो स्पीड पे भी रहता है, लेकिन बीच का भी स्पीड रहता है वो. नहीं तो स्टेशन आते ही फिर ऐसे थोड़ी ब्रेक लगाएगा, फिर सब लोग नीचे गिर जाएंगे. नॉट पॉसिबल. सो एनीथिंग इज पॉसिबल, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड समटाइम्स डिजिटल, समटाइम्स एनालॉग, इंटरमीडिएट स्टेज आल्सो पॉसिबल. बट ट्यूबलाइट को हम लोग एनालॉग जैसे चला ही नहीं सकता है, क्योंकि वो इट डजंट वर्क. उसका इंटेंसिटी वी कैन नॉट, मैं उसका सर्क्यूट ही ऐसा है कि इट डजंट वर्क फॉर इंटरमीडिएट स्टेट्स. बट बल्ब कर सकते हैं 100%, 0% इंटरमीडिएट. मोटर्स भी कर सकते हैं. बट आई एम सेइंग जो मोटर एसी में है वो इंटरमीडिएट स्टेजेस नहीं है. So, but we can change the temperature, that cooling also change. That we can say that. No, cooling, that's what I want to understand. Now I am asking, it's a debatable question. Let's say you have an air conditioner, you kept it at 18 degrees. Somebody kept it 25 degrees, somebody kept it 30 degrees. Okay. What it changes inside that? There is a compressor outside. Okay. Now, I may be wrong. मैं wrong भी हो सकता हूँ. I'm not saying I'm correct. Is the compressor का speed change हो रहा है? आपको ज़्यादा cooling चाहिए? या on time and off time of the compressor change हो रहा है? मुझे मालूम नहीं. Because see, it's not that कि AC एक ही टाइप का है, ऐसा जरूरी नहीं. AC में भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं. आजकल इन्वर्टर बेस्ड AC भी आते हैं ना, इन्वर्टर इनबिल्ट AC भी आते हैं, उसमें भी टाइप्स रहते हैं. Understand? Whatever. I am saying कि how the motor in a AC is functioning. अगर मुझे ज्यादा कूलिंग चाहिए, देयर आर टू वेज. ज्यादा कूलिंग चाहिए मतलब वो कंप्रेसर का भी बंद ही नहीं हो रहा है, आप फुल ऑन करके रखा है, क्योंकि आप ऐसा सेट किया टेम्परेचर जो उसके बस की बात नहीं है कि वो टेम्परेचर अचीव करना. यू केप्ट इट 18 डिग्रीज, इट इज इम्पॉसिबल टू मेंटेन, क्योंकि एम्बिएंट टेम्परेचर इज 35 डिग्रीज एंड 18 तो हो ही नहीं सकता है. सो कंप्रेसर इज ऑलवेज ऑन, फुल स्पीड पे वो आपने चालू करके रखा है. तो कोशिश कर रहा है 18 नहीं हो पा रहा तो ऑन है. ठीक है. दूसरा ने क्या किया, 18 डिग्रीज तो कोई फूल भी नहीं रख सकता है, तो चलो यार रीजनेबल ना, मीनिंगफुल, बाहर 35 डिग्रीज है, चलो 28 रखते, तो 7 डिग्रीज इज तो कोशिश कर सकता है. तो फिर वो क्या करेगा, चलो 35 है, मैं लेके आया 28, अब मैं अभी कम हो गया, अभी चलो अभी कंप्रेसर थोड़ा बंद करो, फिर वापस रूम का टेम्परेचर थोड़ा गर्मी बढ़ेगा, फिर चलो कंप्रेसर चालू करो, और डाउन हो रहा है कंप्रेसर बंद करो. सो कंप्रेसर ऑन, कंप्रेसर ऑफ, कंप्रेसर. So if you are setting a value which is achievable, then on off of the compressor. If you are setting a value which is not achievable, वो पूरा ऑन करके बैठा है 100% पे, अभी वो बंदी नहीं होगा, तो फिर ऑन है 100%. अभी इसमें बीच में क्या हो सकता है? So, but 7 achieve that, correct? वो 100% on नहीं होगा. नहीं, वो मुझे भी श्योर नहीं है कि अब कैसा है. अभी उसमें भी टेक्नोलॉजीज, नया टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं. ये भी एसी इन्वर्टर्स नया. इफ यू स्पेंड सम 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा, दे गिव यू 5-star ACs, ऐसा. उसमें भी न्यू टेक्नोलॉजीज. बट
So इसलिए I said it's a debatable thing कि वो कौन सा टाइप का AC आप बात कर रहे हैं वैसे. So but in principle if I say कि 100% एफिशिएंसी के साथ सिस्टम को मैंने चालू करके रखा है और कोशिश कर रहा हूँ अचीव करने के लिए, लेकिन उसका मतलब आप कर क्या रहे हो, उसको आप मरवा रहे हो, आप लिटरली आर किलिंग द एसी, क्योंकि यू सेट सम वैल्यू व्हिच इज नॉट पॉसिबल टू अचीव, फिर वो पूरा कोशिश कर रहा है तो पूरा आपका लाइट बिल भी आ रहा है पूरा, और 1 सेकंड के लिए भी बेचारा वो सांस नहीं ले पा रही है, रेस्ट नहीं दे रहा है, चालू करके रखा है, जब 6 घंटा 10 घंटा 12 घंटा वो बंद ही, उसको रेस्ट ही नहीं दिया आपने, तो लाइफ खत्म कर रहे हो उसका, एक करंट बिल बढ़ा रहे हो, 2 चीज. So that's why frankly speaking people doesn't know how to use the AC. This is the reality, entire world. This is the reality. You have not understood how a AC works, so you are unnecessarily wasting your energy, money, life of the AC. Most importantly, you are killing yourself. You are reducing your life by using the AC at unwanted temperatures by setting the AC. This is the reality. अब carefully आप study करो, you will understand. यहाँ there is a principles of थोड़ा thermodynamics may be involved. Means let's say for example any system, your body, human body, we are designed for what? To work at the ambient temperatures, right? What is ambient temperature? At least India में, Mumbai में 30-35 degrees we are like that. Europe में ठीक है 20 degrees, some other countries में 10 degrees or whatever. Now here we are at 35 degrees. When you are at 35 degrees, suddenly you come to AC room and inside, and you want to be in a freezing temperature, उसको 25 पे और कम करने के लिए कोशिश करेगा, 20 पे ऐसा ऑपरेट कर रहा है, तो ठीक है, आप बड़े बड़े टन्स लगा के वो आपको करवा रहे हैं, बट व्हाट इज हैपनिंग टू योर बॉडी? यू अंडरस्टैंड? एनी मेटल ऑब्जेक्ट भी ले लो, कोई भी एनी मटेरियल को, if you change the temperatures drastically, what happens to that material? Exactly, it becomes brittle, it breaks down after some time, isn't it? तो आपका बॉडी जो है, ये बोन्स जो है, आप इसको आप ये जो कर रहे हो, थर्मल वाइब्रेशंस यू आर गिविंग, ठीक है? सो वन डे आपका बोन्स, आपका बॉडी बिकम ब्रिटल. अंडरस्टूड? सो बी नेचुरल मीन्स चलो बाहर 35 तो 2-3 डिग्रीज कम करो, ठीक है, समथिंग लाइक दैट. वहां throughout the day it's a different, and suddenly you come inside and you want to be in a chilled this thing. Means look at the difference. Anyhow, so coming to the point again, so since still I am talking about digital only, but like air conditioners and all, they are high voltages. That's why आपका board पे भी इस बार my first time I had given one device called a relay. एक blue color का आपको मैंने एक relay दी. So here also if you see there is something called relay. Because why do we require relay? When I want to operate my fan 230 volts, my AC or bulbs, tubes, all high voltages, that I cannot connect it to transistor. That I cannot connect to my microcontroller. So there is a relay called electromagnetic relay. Again, relay is also a switch. Transistor is also a switch. My CPU is also a switch. But my CPU is driving the transistor is driving the relay is driving your motors or whatever. So that is called driver. So please understand that sometimes you have to use the drivers even if you are working in digital electronics, because the voltages and currents are not same. Your CPU is working on either 0 or 3.3 volts, but other devices are not working on 3.3 volts. They are working on high voltages, but they're also digital, either on or off, but voltage is not same.
So sometimes we have to do these things. Okay. All right. So okay. So I hope this semester, generally, even nowadays, even 12th also, you have what is called gates, right? You have subject called digital electronics, gates. Gates are basically works on zeros and ones, and have some logic inbuilt. As per that, there is some combination. Based on the combination, the output changes, right? They have something like that. But how a gate is made? Gates are also made up of, please remember, by using transistors. Gate is also made up of a transistor. Okay. And your CPU is made up of gates. Your memory is made up of gates. Your peripherals are made up of gates. In short, all the components are made up of transistors. So far, what I explained, transistor as a switch. So transistor is a NOT gate. Transistor is a switch means what? Transistor is a NOT gate. So if you can make gates by using transistors, CPU by using gates, that means the entire your IC, whatever you are talking, microcontrollers, memories, peripherals, all of them are made up of finally transistors. So understand that finally everything is made up of a transistor. Now, how much memory, how much speed, right? That's what every time we are worried, right? Mera device ke andar how much memory, what speed it is working. That's what your problem is, right? That's why you are changing the CPUs, you are changing the memory, you are changing the pen drives, you are changing the mobiles, you are changing the laptops, you are changing the computers, because you want every time more. Not money, less cost में more. Not size, small size में more. आप नेचर का ऑपोजिट में काम करना चाहते हो, राइट? आपको ज्यादा चाहिए, बस पैसा ज्यादा खर्च नहीं करने का. आपको ज्यादा चाहिए लेकिन वजन नहीं बढ़ाने का. आपको ज्यादा चाहिए लेकिन स्पेस नहीं बढ़ाने का. इट्स अगेंस्ट द नेचर ना. अगर मेरा टेबल के ऊपर ज्यादा सामान चाहिए तो फिर बड़ा टेबल चाहिए. वजन बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन नहीं, आपको साइज नहीं बढ़ाना है लैपटॉप का. लैपटॉप मतलब पिछले 20-25 साल से लैपटॉप का साइज उतना ही है. However, what was the operating speed that time? Few megahertz, अभी gigahertz. उस टाइम मेमोरी कितना था? किलोबाइट्स. अभी आप टेराबाइट्स. मतलब एवरी एंड द बैटरी, अभी तक कोई बैटरी इतना बड़ा नहीं, अभी भी डे बाय डे उल्टा और कम होते जा रहा है. उस टाइम का एडाप्टर जो है इतना मोटा था, अभी आपका इतना छोटा सा एडाप्टर है. So that's what is the whole design is all about it, right? Understood? You want something to improve, but definitely some other thing will affect, but still you do not want that to affect. That's the challenge. So that is why today my topic is all about constrained environment. We have a lot of challenges, lot of constraints. We want everything much better, high performance, good results, high quality, but in a constrained environment. आप ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते हो, ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं, मेमोरी नहीं बढ़ाएगा, ये नहीं बढ़ा, उसी सिस्टम पे आपको और ज्यादा चाहिए. That's why this is interesting. That's why I named this topic is called that sections of a program, not as a computer perspective, as a single board computer perspective. Though you understand in computer also, whenever you write a program has sections and subsections. But I am saying, but in computer, right? In computer, you are not bothered those things. Okay? You're not bothered.
because finally it goes to hard disk, और hard disk नहीं है तो आप cloud पे डालते हो, and so on. You're not bothered about those resources, but अपना यहाँ everything is a big challenge. So that's why it is important whenever we write the programs, we need to understand what are the constraints, because what we are talking about is a single board computer, a small tiny systems. So these are the challenges. Okay, so when you are choosing these components, please remember, like I was saying, that they have some driving capability. Okay, they have some capacity. For example, I want to connect a LED. You have seen, right? You have seen how LED is connected. But then, can my IC can drive that LED or not? Right? You have seen. I have connected a relay also. I have connected a motor also. I have connected sensors also. When you are connecting anything to these digital gates, do they have the ability to drive? Okay, that's called, what is called sourcing and syncing. Please remember, always two things are important: current and voltage. Okay, sometimes we neglect one parameter. That's not correct. You should always remember both the things, current as well as voltage. For example, take a LED. Okay, now let's say I want to connect a LED to your gates or your microcontroller, whatever. Okay. When the LED will be on? Okay, you said 1. What do you mean by 1? Now talk about the Ohm's law. When the LED will be on? So voltage higher होगा आया. When it will be on? When current will flow. When the current will flow? When the junction is forward biased. When the junction will be forward biased? The potential difference is Greater than? potential barrier. How much? By 0.7 volts. Right? Generally, any PN junction diodes 0.7 volts, but LED में थोड़ा ज़्यादा रहता है. So LED में 1.2 volts. Okay. So that means the moment anode potential is greater than the cathode potential by 1.2 volts, then it will be forward biased. Then current will flow. But that's not over. Okay, that you are talking about only the voltage drop. I am saying what should be the amount of current a LED can withstand. You give only half information. How much current it can allow to pass. Beyond that, the junction will be damaged. How much current it can withstand. Understood? That is called load. Right? Current is nothing but load. I. Okay, so let's say, for example, 10 milliamperes. If that fellow says that LED can withstand 10 milliamperes of current. Now, two important informations I had given. Unless the anode potential is above 1.2 volts, it won't forward biased. Second is the amount of current a LED can withstand is 10 milliamperes. Now tell me how much voltage I should apply here. More than 1.2. So if I apply 5 volts, is it okay? If I apply 10 volts, is it okay? If I apply 100 volts, is it okay? If I apply 1000 volts, is it okay?
more than 1.2. What happens? Above 1.2, 5, 10, 20, 100, 500, 1000. What happens? Current will increase and cannot withstand that current. will be on. No, you are giving what you want rated is 1.2 volts. Anything above 1 point should be okay. No? See, End of the V is equal to IR. I already had given. ये आप क्रॉस नहीं कर सकते हो. ये क्रॉस किया तो उड़ जाएगा. राइट? एनीवेयर कभी भी कोई भी मोटर जल गया, बल्ब जल गया, कोई भी सिस्टम जल गया, सीपीयू जल गया, कोई भी जल गया, मतलब क्या है? मोर देन द करंट. दैट्स व्हाई आई सेड हम लोग sometimes we don't understand. We don't talk about the current. We only talk about the voltage. Oh, my CPU is working on 3.3 volts. My memory is working on 3 something. We only say voltage, but you are not talking about the current. Load means current. कोई भी चीज जल जाता है वो करंट का वजह से. So both are important. Please remember, and as electronics perspective, both are always important. Okay. So if I want to connect 100 volts, I can connect. I can connect 1000 also. I can connect 2000 also. No problem. You already seen ना अभी spike guard में LED रहते हैं. It is connected to 230 volts. No problem. Even during festivals वो जो LEDs जो है we directly connect to 230 volts. No problem. But what do they do? If you are increasing the voltage, what do? They increase the resistance. Finally, you have to obey the Ohm's law. Right? If my V is increasing, then R has to decrease, no? Oh, I'm sorry. R also increase. I have to obey that because I is constant. I might change नहीं कर सकते. 10 milliamperes है. Understood? So please remember, since we are playing with the components and boards in future, you will be building, designing your own systems. Always remember the current as well as voltage, not just one parameter, both the parameters. Okay, so, and there is another important thing called noise margin. Noise margin means percentage of tolerance. थोड़ा बहुत अगर कम ज्यादा हो गया तो चलेगा क्या? Means, for example, your CPU, your memory, whatever, is operating on 3.3 volts. अब आज थोड़ा 3.3 से थोड़ा कम हो गया, एक 5% कम हो गया, चलेगा क्या? 10% कम हो गया, चलेगा क्या? 0 volts, it is expecting 0 volts, लेकिन आज 0 volts मैं दे नहीं पाया, मैं थोड़ा 0.1 दिया, 0.2 दिया, चलेगा क्या? So there is a tolerance, please understand that. So you also remember when you study these components that what is 0, what is 1. 0 means 0 है, थोड़ा चलता है क्या? 0.1, 0.2. 1 means how much? 3.3 है, थोड़ा चलता है क्या? 3.2 या थोड़ा ऊपर 3.4. Understood? Margin. There is some margin is there. तो वो भी आपको you have to keep it in mind because when we are talking the things, हो सकता है कभी थोड़ा पिकअप भी होता है. Right? External, अपना body also has some static charge. ठीक है? When you are touching the components, यहाँ से भी थोड़ा potential उस पे जा रहा है. There's a current is flowing. अपना कुछ कपड़े मालूम है ना, अपने को शॉक देता है कभी कभी ऐसा पकड़ना. Because there is a charge. They are charged. तो वो आपके थ्रू डिस्चार्ज कर रहा है. That's why you get a shock. So components are bound to damage अगर वो tolerance पे आप operate नहीं कर रहे. ठीक है? Anyhow, this is some basic things. Okay, so finally, so that's just I thought before we directly jump into program, please remember that we are talking about a system which is a digital system
and we are talking a system which is a constrained environment. We should understand the limitations also, because this is not a computer. कंप्यूटर किसी ने बना के दिया, हम यूज कर रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम्स हम बना रहे हैं. आप खुद सोल्डर कर रहे हो, आप खुद अपना सिस्टम बना रहे हो, तो हो सकता है आपका सीपीयू नहीं चलेगा, आपका मेमोरी नहीं चलेगा, आपका पेरिफेरल नहीं चलेगा. You need to understand, it's not that the combination of software and hardware. Okay. So now we will go to the programming point of software. So embedded C. So before I talk about the embedded C, again, quick review about the computer organization. So in computer, what do we have inside the box, right? There is a CPU called arithmetic and logic unit, and there is a memory. And memory is two types: program memory, data memory, and some peripherals, some registers. Understood? So all of them are undoubtedly made up of gates. Gate means they are made up of transistors. So in short, finally, all are transistors. Okay. You understood, right? These components. There is a difference between program and data. Do you understand this? Program is different, data is different. Okay. Understood? There is a program, there is a data. Okay. For example, right now this room temperature, I'm continuously measuring the room temperature. That's the data. Right? Every second I'm measuring the temperature. This is data. But what is program? Switch on the AC. That's a program, right? You are giving a command that, okay, now temperature is reached so and so. Compare. I want this. However, currently this. Now take a decision. That's a program. That's instruction. But what is data? 25. Your sensor has given some value. That's your data. So every system, right? Every system has a program and data. Why I am emphasizing this point is because when we write the program, your program consists of your entire, whatever you write, code consists of program as well as data. So that's why you keep it in mind. What do you mean by program memory, data memory? So these are two different things. And there is a arithmetic and logic unit, which will perform your all addition, subtraction, multiplication, divisions, all those things. And there is a controller, CPU, which will execute the program, right? Your commands, whatever you have written the program. Okay. Fine. Now, okay. Very simple thing that what is program? So far, I told you, right? Whatever we are talking about is digital electronics. Simplest component is a transistor. Transistor is a switch, is a digital. From that, we talked about the gates, and then we said that there is also a arithmetic and logic unit, and so on. Okay. So program is finally, if you carefully see, program is nothing but zeros and ones. A CPU, any gate, anything, they understand only this language. Only this language, no other language. CPU understands only this. But however, do we understand this? We don't know. This is saying that move dx. This is saying that move cx comma dx. This is saying subtract. But अब ये मैं hide करता हूँ. इसको देख के आपको समझ में आता है ये कौन सा instruction है, इस कौन सा, हमें समझ में नहीं. Understood? So since we don't understand the machine language, we don't understand. Yeah, it's very difficult. इसलिए अपना convenience के लिए हमने क्या किया था कि भाई हम लोग ऐसा लिखेंगे, we'll write like this, and then somebody else will convert this into this, so that finally CPU has to face only this, because CPU is nothing but transistors. Transistor can understand zeros and ones. This is called assembly language. Okay. So
we have used assembly language, कम से कम 30 years we have used. Till 2006 or 7, we have extensively used as this language. We have used for several years. लेकिन last 15-20 years से we are not using this. What we are using is, right? No, like your, actually, sorry, it's not there. No, okay. Some high level language. So what is high level language is, you all know that some C or something, Python, Java, like that. Okay. Why are you not using this? Because if you are using assembly language, then you should remember, you should know what is the CX, what is the DX, all that you should know. It's very difficult because it's not, CPU is not one, no. There are many CPUs are there in the market. But जैसे ही CPU बदल गया फिर ये change हो जाएगा ये सब. But then it's very difficult to remember. So that is why people are finding, नहीं अभी हम लोग high level पे लिखते हैं. High level language means what? Simple English language, right? It is nothing to do, your high level language is nothing to do with the architecture of the system. Architecture of the system means इससे कुछ लेना देना नहीं. You are not bothered, right? You are not bothered कि कितने रजिस्टर, देखिए उसका नाम ऐसे ही रहता है सीपीयू के अंदर, कितने रजिस्टर्स है, कौन सा एएलयू है, कौन सा फ्लैग्स है, ये सब एक्चुअली उसका लैंग्वेज इस फॉर्म पे चाहिए. इसलिए वो इंस्ट्रक्शंस में, आपका इंस्ट्रक्शंस में ये सब रहता है, सी एक्स डी एक्स ए एक्स बी, वो उसका नेम है, हर रजिस्टर का नाम है, हर मेमोरी लोकेशन का नेम है. लेकिन हम लोग फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर, क्योंकि आजकल एक सीपीयू नहीं ना, हंड्रेड्स ऑफ सीपीयूस है, फिर देन इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो इसलिए व्हाट वी प्रेफर्ड इज सम यूनिवर्सल लैंग्वेज. लेट्स राइट इट इन ए हाई लेवल लैंग्वेज. ओके, बट अल्टीमेटली यू यूज एनी डैम थिंग. इसके ऊपर भी आ गया अभी, इसके ऊपर क्या आ गया अभी हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर आजकल क्या चल रहा है? No code platforms, right? Java is also high level language. I'm saying no code. No code means you don't need to write code. ऐसा भी है जो you don't need to write code. Platform, हाँ? मैंने scratch. हाँ. GUI, right? Drag and drop. I have some products like that. एक आपका वो आपका लिफ्ट के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है, क्या स्मोक कोड करके, वो स्टूडेंट से है, सम स्टूडेंट टीबीआई पे, आई थिंक बगुबाई पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट्स है ना वो. अच्छा, एक एसपीआईटी है क्या? अच्छा, दे मे बी वन भगू भाई का स्टूडेंट डिप्लोमा वहां से किया हो, बिकॉज नो आई एम सेइंग, एक बार क्या हो गया था, भगू भाई का फैकल्टी आया था अपना यहाँ, तो दे वांट टू विजिट आवर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, एंड शी वाज टेलिंग कि ये हमारा स्टूडेंट्स है, ये तो हो सकता है ना, उनका स्टूडेंट्स अपना स्टूडेंट्स भी बन सकता है ना, बिकॉज भगू भाई से पॉलिटेक्निक कॉलेज, उधर से डिप्लोमा किया होगा, यहाँ से डिग्री किया होगा, सो दोनों का स्टूडेंट्स हो सकते हैं. So maybe possible. Okay, anyhow. उनका प्रोडक्ट क्या है मालूम है? No code. So you don't need to write code. That means इसके ऊपर का लेवल. So no code. Possible. GUI, graphics, drag and drop it, code will be generated. Okay, understood now? Yes. Whatever you do it, CPU understands only this. ये इतना याद रखो आप जिंदगी भर. आप कितना भी ऊपर जाओ, बट फाइनली आप GUI यूज करो,
कंपाइलर यूज करो, असेंबलर यूज करो, finally the code is output file. What I'm trying to say is final output file of anything you use is this. That is called binary file. Final output file is this. Is that clear? Okay. So now it's a choice. Okay. We have a choice. अभी कौन सा आईसी सेलेक्ट करना है अपने को? इतने सारे, सी द पैकेजेस. आपने भी कुछ सोल्डर किया, कुछ किसी में पिन्स है, किसी में पैड्स है, कुछ एसएमडी है, कुछ में पिन्स भी नहीं रहते, दे आर सोल्डर्ड. फॉर एग्जांपल ये आईसी जो है, यू सी साइड 4 साइड्स में पिन्स ही नहीं है इसके ऊपर, आईसी का नीचे डॉट्स रहता है. So that we cannot solder it. That is done by machine, right? We have in TBA also we have some machine. Understood? So it is your choice that which IC to be selected, which package. IC के अंदर भी वापस packages अलग रहता है. So which package to be selected is a choice, as far as our this thing is concerned. Okay. So now I am saying, I am putting some questions. I know it takes a lot of time to explain these things. It's not possible. But you also question yourself, right? Abhi, when you go home, abhi you question yourself. कितने type का computational devices are there? You should always lifelong, you should question this. How many computational devices are there? ठीक है? You know microprocessor. How many microprocessors are there? You always talk about Intel, i3, i5, i7. You talk about or AMD का वो what's that? You have some right? So you have some Ryzen series. So this I'm not answering your question, but I am saying that आप थोड़ा स्टडी करो ना नेट पे, कितने टाइप का सीपीयूस अवेलेबल है. ओके, आजकल और एक कॉन्सेप्ट आ गया जीपीयूए करके. ओके, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एमएल पे एनवीडिया इज हेवीली इन्वेस्टिंग. सबसे अभी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री हो गया एनवीडिया. इतना डिमांड आ गया एआईएमएल के वजह से. एनवीडिया इज डूइंग एक्सट्रीमली गुड, राइट? टॉप वर्ल्ड का टॉप 5 कंपनीज में ना एनवीडिया इज देयर, who is manufacturing GPUs. Okay, so and even America has banned NVIDIA not to export their chips to China, right? Because China is using for I don't know some other applications of NVIDIA chips for AI based some products. क्योंकि आजकल कोल्ड वॉर चल रहा है ना, so they some wars are happening, so they are protecting these chips to be used in some other applications. So such as smart devices are available from NVIDIA. So it's an interesting area that the CPU which may be limited, but you should also take interest in understanding कितने types का CPUs होते. Broadly, I will explain you. Broadly, CPU, GPU, FPGA, ASIC. 4 types के होते हैं. If at all broadly अगर आपको classify करना है तो. Okay, so study it. We will debate in future. अगर आपको अभी too early है आपके लिए सब मुझे बताना. But as and when you get time, you just study about it कि which is what. But हम लोग इस कोर्स में CPU we are using. But GPU भी आते, FPGA भी आते, भी ASIC भी है मार्केट. All of them are computational units.
सो नेट पे ऐसे ही टाइप कर लो कि टाइप्स ऑफ computational devices. Then we will debate anytime we will interact. Okay. Now our topic. How many CPUs are there? ठीक है. तो ये again you Google पे आप सर्च करो. I'm not giving you any number. आप खुद ही टाइप कर लो. How many microcontrollers are there? ठीक है. ऐसे ही टाइप कर लो. तो फिर आप खुद ही सरप्राइज हो जाओगे. क्योंकि आपको तो CPU मीन्स ओनली i3, i5, i7 वो 3-4 ही दिखते हैं. बट आई एम सेइंग, मैं आपको कुछ वेबसाइट्स का नाम दिया जो इंटरनेशनल है, मल्टीनेशनल कंपनीज. एलिमेंट 14, ओके, एरो एशिया, RS कंपोनेंट्स, डिजीकी, TI, मैक्सिम, माइक्रोचिप, एटमेल, एनालॉग डिवाइसेस, और भी कुछ और 2-3 है. राइट, सॉरी ये मैं भूल गया, ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स. राइट. सो यू जस्ट किसी का भी वेबसाइट पे जाके आप टाइप करो कि हाउ मेनी माइक्रो कंट्रोलर्स आर देयर. These are not manufacturers, right? Who are the manufacturers? TI, Maxim, ये सारे लास्ट वाले जो है, they are the manufacturers. Element 14, Aero Asia, RS Compounds, Dizzy की जो है, they are the warehouses, like Amazon जी, right? Only for components, electronic components के. So देखते हैं क्विकली, मैं आपको एक गूगल करके दिखाता हूँ, राइट, जस्ट फॉर इंटरेस्टिंग. ओके, लेट्स गो टू एलिमेंट 14. Okay, so you can type it. See, now he, first of all, इसमें भी further classification है. The moment if I type microcontroller, he has given various companies का range. PIC है, STM है, Texas है, 8-bit, ARM, series. ठीक है. जस्ट ऐसे ही उसने 10,000 का लिस्ट दिया, 9,337. ओके, सारे कर इसके पास नहीं है, बट उसके पास जितना भी है फिर भी 9,000 टाइप्स, 9,300 टाइप्स. जो हमें मालूम है खाली 3 या 4 CPUs, बट आई एम सेइंग खाली एक के पास, ओनली वन सप्लायर के पास इज हैविंग roughly 10,000 CPUs. Do you understand? That is the beauty of this topic called single board computer. मतलब अगर आपको आप you go to market, चलो अभी स्टार बाजार गया, कुछ गया, ठीक है, आपको कुछ जूता खरीदना है, ठीक है, you want to buy shoes. आप एक शॉप में गया, चलो बाटा में गया, बाटा शॉप में गया, वो कितना मॉडल्स रहेंगे, 4-5. सो उधर ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है आपको, भाई आपका बजट के हिसाब से एनी मॉडल यू सेलेक्ट. बट मैं बोल रहा हूँ, आप स्टार बाजार गया, कुछ बिग बाजार समथिंग इवेंट, आपका सामने 10,000 जूते, ठीक है, तो आप खुद पागल हो जाओगे, यार अभी कैसा सेलेक्ट करो. 10,000 चॉइस टाइप्स है ना, इट्स नॉट सेम. 10,000 मॉडल्स आर देयर. ये क्वांटिटी नहीं है, ये टाइप्स है, माइक्रो कंट्रोल टाइप्स है. वो भी पूरा नहीं है, वो एक दो कंपनीज का ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इज गिविंग. अंडरस्टूड? दैट इज द इंटरेस्टिंग फील्ड. दिस एरिया ऑफ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिजाइन, ये कोई मजाक नहीं है कि भाई नेट पे देखो आर्डिनो बोर्ड ले लो, ऐसा कुछ भी चाइनीज का 2-3 बोर्ड ले लो, यही इंजीनियरिंग है. दिस इज नॉट इंजीनियरिंग. जो ऑनलाइन 1-2 बोर्ड जो पॉपुलरली सब लोग जो बेचते हैं, हम लोगों ने खरीदा, वो यूज किया, दैट्स नॉट इंजीनियरिंग.
10,000 में से आप चुन के बताओ मुझे, देन दैट इज इंजीनियरिंग, राइट? आप डिजाइन करके बताओ कैसा सेलेक्ट किया आपको। चलो कुछ प्रोडक्ट बनाना है आपको, चलो नया मोबाइल बनाना है आपको, अभी बता दो कौन सा सीपीयू आप पिकअप करोगे इसको। आपको एक ड्रोन बनाना है, चलो कौन सा सेलेक्ट करके दिखाओ। आपको एक सैटेलाइट बनाना है, एक रोबोट बनाना है आपको, ये सभी एप्लीकेशंस ये है ना आपका, आईओटी एप्लीकेशंस है, एआई एप्लीकेशंस है, तो चुन के बता दो इसमें से। तो अब क्या, व्हाट इज द क्राइटेरिया, अंडरस्टूड? सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि डोंट टेक इट दिस लाइटली कि सिंपल कि बस 2-3 में से एक लेना है। 2-3 में से एक नहीं है, देयर इज अ वाइड चॉइस इज देयर। ओके, अंडरस्टूड? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस? सिलेक्शन इटसेल्फ इज इंटरेस्टिंग। चलो आपको टी शर्ट खरीदना है, ठीक है, इफ यू गो टू दिस एक दो शॉप में, आपको ज्यादा कौन सा शॉप है ना, ये पीटर इंग्लैंड समथिंग, आदित्य बिरला का, तो ज्यादा चॉइस नहीं रहते हैं ना, सब भी ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो जो आपको पसंद आए वो पिक। लेकिन एट द सेम टाइम आई एम सेइंग, घर पे बैठ के पीटर इंग्लैंड नहीं, वो ऑनलाइन भी कपड़े का ये है, आप पूरा दिन भर भी बैठोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा लेना है। वो इतना चॉइसेस वो देते रहते हैं, हजारों, तो यू आर कंफ्यूज एंड ऑफ द डे, यार जाना दो आज नहीं खरीद, एंड यू हैव मेनी चॉइसेस, देन यू आर कंफ्यूज ना कि हाउ टू चूज। अंडरस्टूड? सो आज आप इस स्टेज पे है कि अगर आपको जो चाहिए वैसे भी कंपनी से आपको वो माइक्रो कंट्रोलर बना के देने के लिए लोग तैयार। दिस इज द रियलिटी टुडे। आई एम टेलिंग यू एज एन इंजीनियर, आप फाइनल ईयर पे जाने के बाद आपको लगता है यार मेरा प्रोडक्ट के लिए मुझे इस टाइप का सीपीयू चाहिए और मार्केट में नहीं है, तो आपको बना के देने के लिए लोग तैयार। अंडरस्टूड? कंपनीज आर देयर। जैसा आपको पसंद नहीं आया रेडीमेड टी शर्ट्स, रेडीमेड कपड़े, आप क्या करते हो? खुद कपड़ा खरीदते हो, टेलर के पास जाते हो, मुझे ऐसा काटो ऐसा काटो, ऐसा आपको जैसा जैसा बना के लेते हो। तो दे आर पॉसिबल, टेलर्ड मेड सीपीयूज आर पीपल आर विलिंग टू मेक। सिंपल, सो मेनी कंपनीज आर डूइंग दिस। अपना सीपीयू, उसमें फायदा क्या रहता है? खुद का सीपीयू बना के लिया तो व्हाट इज एडवांटेज? या बोथ आर सेम, मतलब कोई कॉपी नहीं मार सकता है। खुद का डिजाइन से क्या फायदा है? मेनी एडवांटेज आते हैं। आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पायरेसी। ठीक है, आप पीटर इंग्लैंड से एक शर्ट खरीद के लेके आए, मैं भी उधर से खरीद के लेके आया, नेक्स्ट डे पर अरे तू अपना सेम ही वो तो वही ब्रांड बेच रहे पूरा दुनिया, तो ऐसा लगेगा स्कूल ड्रेस जैसा हो जाएगा। तो जितना फिल्म स्टार्स है वो लोग क्या करते हैं, पीटर इंग्लैंड में थोड़ी जाते हैं, वो लोग अपना खुद का कोई डिजाइनर रहता है, वो नया नया बनाए। लेकिन उसका कितना कॉस्ट रहेगा? एक एक कॉस्ट्यूम 1-1 लाख का रहेगा, 2,000 रुपये नहीं आता है ना। तो सेम थिंग, ये जो आपको माइक्रो कंट्रोलर बना के चाहिए, तो 100 रुपये में 200 रुपये में नहीं बनेगा, लाखों का खर्च आएगा, लैक्स में रहता है, लेकिन फिर भी वर्थ है। कब वर्थ है? जब आपके पास बड़ा बिजनेस है, तो ज्यादा कस्टमर्स है ना, फिर खुद बना के ले, फिर वो आप फायदा में रहोगे। कैसे फायदों में रहोगे? एक जो है आपका कोई कॉपी नहीं मार सकता क्योंकि खुद का डिजाइन है, सिक्योरिटी रहेगा, परफॉर्मेंस रहेगा क्योंकि खुद का पॉइंट ऑफ व्यू से बना के लिए, सस्ता भी हो सकता है क्योंकि आपका कस्टमर ज्यादा है आपके पास, सब पॉसिबिलिटीज। ओके, अंडरस्टूड दिस टॉपिक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने कंपाइलर्स है? आप अभी सिंस यू आर स्टिल बिगिनिंग, तो आपको थोड़ा सी मालूम है, पाइथन सुना है, जावा सुना है, ऐसे कितने कंपाइलर्स है?
जो मार्केट में अवेलेबल है। मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है, बट आप ऐसे देख लेना, कभी विकिपीडिया में भी है ऐसा, जो स्टडी की इस टाइप का कंपाइलर्स होते हैं। ओके, मेरा क्वेश्चन यह है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कंपाइलर्स विच आर यूज्ड इन कंप्यूटर, क्योंकि अपना टॉपिक ही नहीं है वो। अपना टॉपिक क्या है? अदर देन कंप्यूटर, जो कंपाइलर्स कंप्यूटर छोड़ के, सिंगल बोर्ड कंप्यूटर मीन्स व्हाट, नॉट फॉर कंप्यूटर नो, इसके लिए चाहिए। तो उसके लिए ज्यादा कंपाइलर्स, कौन सा कंपाइलर्स इस अगेन, तो वो टाइप करते वक्त आपको क्या टाइप करना चाहिए? इधर एम्बेडेड टाइप करो और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडी करके टाइप, then you will come to know some company, एक Arduino है, it is also a compiler, very soon we will be using this, but you will find some other compilers, right? जैसा ARM का Keel है, then Microchip is a very popular company. So majorly we will be focusing in one or two compilers. Similarly Python में भी माइक्रो पाइथन आ गए, जावा में भी, मतलब आईडीई है उसका भी, कंप्यूटर के लिए भी है, नॉन कंप्यूटर्स के लिए भी, whatever. So definitely what we are interested here is integrated development environment means what? Okay, आप जो compiler when you use in computer, how do you write the program? Okay, how do you compile the program? How do you execute the program? You have some flow. Similarly, for a single board computer, when you're writing a program, what is the difference? How do you write the program? How do you compile the program? How do you execute the program? Okay, understood? Some differences you have to notice. So that we will see. Slowly we will see what is the difference. Though language जो है वो, I said no, still we are saying C, still we are saying Python, still we are saying Java, but it is not same. Compiler is not same. It is different. So there is my slight difference is there. अभी आप देखो, ये Windows से ही आपको पता चलता है. For example, MP लैब का आईडी देखो, ये इस टाइप का विंडो आपने कभी देखा नहीं होगा, ये कुछ अलग ही टाइप, उसका दिखने में भी अलग रहता है उसका कंपाइलर, एनवायरनमेंट इज नॉट सेम. I know it is too early to speak about it, but when we practice it, then you will understand what I am saying now, that the environment for writing the program, compiling the program, executing the program are different. We will practice that, क्योंकि आपको भी we had given some CPU, उसका environment भी we will see what way it is different. मतलब day to day life में how do you write the program और ये ID use करके how we write the program is different. Okay, so this slide I already said that, I mean why it is different is because computer पे कैसा है कि we always have a operating system and there is a boot process, उसके बाद हम लोग programs लिखते हैं. बट अपना आईडी में कैसा है कि देयर इज नो ऑपरेटिंग सिस्टम, देयर इज नो हार्ड डिस्क. तो वट एवर वी राइट, whatever we write, a linker link all these object files and creates a binary file that will be executed. ठीक है, तो आई विल स्टॉप हियर, क्योंकि इसके बाद जो है थोड़ा हम लोग डेप्थ में जा रहे हैं, विल गो इन मोर डेप्थ. सो विल टेक ए ब्रेक फॉर 10 minutes and then we'll come back. Okay, so then actual topic jo hai, that is what is the sections and subsections of a program, so that we will be focusing. Okay, okay, any questions online? We will take a break for 10 minutes.
All right, so let's start. Okay, so today actually I mainly called for this part of the topic. The earlier what I have discussed is just to know once for all a overview. Why are we doing this? Because it's not about a computer, it's a single board computer where we have constraints are the biggest challenges. Okay, so our environment will be always like this, right? Where we'll develop some code, right? We have our own IDE, but that IDE doesn't work in computer because the target is not there in the computer. The target is there outside the computer. So we have to transfer it. And then I said, this is a real time in nature because whatever we do it, we can see it on CRO, function generator, we can listen. Whatever. They are not just a numbers, they are signals available in natural time. So they are not just a simulation environment, it's a real time emulation environment. And the coding, right? I'm sure you know some, or you may be learning some languages like C compiler and all. But so far, what I explained you is that you use any compiler, even the no code type, GUI type, whatever. But finally, the compiler compiles and generates the assembly language code. And assembly language code also can use some libraries and all. And then they link them all together, right? And will create some object files. Object files are intermediate stage files. And then finally it creates the binary file, which is loaded. Like I said, hexa file, it's a binary file. That is the file which goes to the CPU. Okay, so our target is not computer, right? We are not loading in computer. Our target is something else, which is like this. Okay, that has to be loaded in the target device. But we can still do debugging through computer because our target is still connected to computer. So we can run the program, we can halt the program because this doesn't have keyboard or display. So that's why these are called headless system. Headless means it doesn't have any LCD or keyboard, nothing. Okay, so we still use. Hmm? Sorry? Off. I don't know where is this. Switch off. Right, so the flow is same irrespective of which compiler you are using. Okay, use any compiler. This is the mechanism. In computer it works, but where it differs here. In computer, what it generates is a exe file. But in our case, in our IDEs, the compilers which we use, they doesn't generate exe file. What they generate is a hexa file. Hexa file is not a relocatable file. That again, you can study it. Like in the past also I said, what do you mean by relocatable files and non-relocatable files? So what we generate is an absolute coding. So that is a target specific. So whatever we generate is target specific. That's why my first slide is about what are the targets.
how many targets are available? Thousands of, right? I have shown you the 9,000 so and so CPUs are available. So you have to choose which target you are writing the program, right? Thousands of targets are there, so you have to choose. But in computer, you are not choosing any target, right? When you write a C program, you don't select any target. But here we select the target. So that where it makes the difference. That is one thing. Second thing is, what do you mean by debugging? Debugging means how to run the program, how to stop the program, how to do some single stepping or whatever. So running the program one instruction at a time. So for that, we still use the computer, right? We still connect our board to computer. From here only we control our CPU. While debugging, अगर आपको debugging नहीं चाहिए तो detach it and your system will work independently. They are working already. They are not connected to computer. But while writing the program, if you still want to see what is happening inside the CPU, you want to observe the internal memory locations or whatever, that is still possible by connecting to the computer. Is it clear? What do you mean by integrated development environment, IDE? This IDE and your computer IDEs like Python, Java IDEs is slightly different. In what sense? Here and here. It's not same. Because in computer, when you are using Python, Java, C, C++ and all, there is nothing like target specific, right? You don't say that I am writing today for i3, I am writing for i5. You don't say that I am writing for AMD. There's nothing like that. Because by default, we assume whatever we write is for Intel CPU, Intel x86 CPU. So that's why we don't choose target. But here it is mandate because IDs are different, right? Compilers are different, architectures are different. Even within the company also, I have shown you thousands of CPUs are there. You have to choose this. That's important. Second is, in normal C, how do you run the program? You run on the same computer. You say run, go, execute, like that. Why? Because the same CPU is there in the computer. So you are running. I will show you one or two programs. But here, we cannot run the program in the same computer because that CPU is not there in the computer. That is in our hand, outside. So that's why we have to transfer the program from the computer, like in few my previous lecture I showed. We plug it and we download the program. We will see you have your own CPUs. You have to transfer it. But after transferring, what happens? It will start executing. That's okay. But we want to debug. Debug means we want different ways of executing, not in one shot. So, or I want to see the variables, what is happening inside the CPU. I want to observe that. But my kaisa observe kare? Yahan to na keyboard and na display. So how to? We still connected there. That's why we still connected to computer. And then that IDE allows still to extract various parameters from this board and display it on your computer. That's why मैं आपको शुरुआत में ये असाइनमेंट क्यों दिया था, राइट मैथमेटिकल मॉडल्स, क्योंकि वो करते वक्त आपको जो भी वेरिएबल्स आएंगे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, यू स्टिल यूज कंप्यूटर ओनली. ऑल द प्रोग्राम्स मे बी रनिंग हियर, बट पूरा रिजल्ट्स आप इसी के ऊपर डिस्प्ले करने वाले. आई विल शो यू वन और टू प्रोग्राम, यू विल डिस्प्ले इट हियर. So that's why that you आपके लिए you feel as if you are still using computer because you are typing through keyboard only, displaying the results on computer monitor only. एक ही चीज नहीं हो रहा है, क्या है वो? Exactly, execute नहीं हो रहा है. Execution यहाँ नहीं हो रहा है, execution यहाँ हो रहा है. प्रोग्राम यहाँ से इस पे आ जाएगा, एग्जीक्यूट यहाँ आ जाएगा, रिजल्ट्स वापस यहाँ से वापस कंप्यूटर पे आ जाएगा और वहां डिस्प्ले कर. That is the loop. तो इसमें चैलेंज क्या है? What is the challenge? Why are we learning this course? This entire coding club, whatever we are doing. सब जगह लैपटॉप. No. सब जगह बड़ा-बड़ा पीसी नहीं लगा सकते. हाँ, exactly. So आप ये कंप्यूटर को ड्रोन पे नहीं लगा सकते हैं ना. कंप्यूटर को ट्रैफिक लाइट में, कंप्यूटर को फ्रिज में नहीं रख सकते, कंप्यूटर को वॉशिंग मशीन में नहीं रख सकते, कंप्यूटर को 2 व्हीलर पे नहीं रख सकते, 4 व्हीलर पे, कंप्यूटर को वॉच पे नहीं रख सकते. लेकिन वॉच पे ये रख सकते हैं, मोबाइल पे ये हो सकता है, मोबाइल के अंदर यही है, यही सीपीयू. सो ये हो सकता है. दैट मीन्स आप जो भी कोडिंग कर रहे हो, जो भी कंपाइलर चूज कर रहे हो, जो भी मैं जब बात कर रहा हूँ, बार बार वही एम्फसाइजिंग, ये जो है, ये दो आई एम सेइंग
computer, but it's not that computer. This is called constraints. Constraints are there. Lot of constraints are there इसके अंदर. यही तो आज के ये लास्ट टॉपिक है मेरा. इसके बाद मैं जो भी अगर मुझे थोड़ा बहुत भी आता है वो मैं कौन सा एक्सप्लेन करने वाला, प्रोग्राम्स एक्सप्लेन करने वाला. तो जब प्रोग्राम व्हेन वी आर एक्सप्लेनिंग, फिर आपको समझ में आएगा कि यार कंप्यूटर पे लिखना बहुत आसान है, लेकिन इधर इतना आसान नहीं. कंपाइलर सेम है, आई सेड ना 90% इज सेम, लेकिन जब कोई चीज इसके ऊपर जब एग्जीक्यूट होता है फिर आपको कुछ प्रॉब्लम्स यू आर गोइंग टू फेस. सो मेरा नेक्स्ट टॉपिक वही है कि व्हाट आर द चैलेंजेस. ठीक है, ओके. सो लाइक आई सेड कि ठीक है, अभी आप एक प्रोग्राम है, ठीक है, एक पॉपुलर प्रोग्राम है. लेट मी सी, एक वेबसाइट है, जस्ट समवेयर आई हैव सीन. Okay, online GDB. Online GDB. Okay. Yesterday only I came to know. नेट पे ढूंढ रहा था कुछ मिलता है क्या, how to write the programs. So online GDB. Online GDB.com. Okay, so all of you have used online GDB. Popular, you must be using. Okay, so this is a paid version also, free version also. Both are available. What it says is that, you can create your own account. Then you can choose you see the compilers. C chahiye, C++ chahiye, Java chahiye, all compilers. ठीक है, so you choose any compiler, let's say any compiler. पिछले 50 साल से यही क्लासिकल एग्जाम्पल है, हेलो वर्ल्ड. मैं 1980 में भी व्हेन आई वाज स्टूडेंट हेलो वर्ल्ड था. व्हेन आई वाज टीचिंग इन 1990 हेलो वर्ल्ड है. आज 2023 में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ हेलो वर्ल्ड. ठीक है, ओके. सो हेलो वर्ल्ड, ठीक है. लाइक आई सेड, आई एम नॉट टीचिंग कंपाइलर, वो आपको वैसे भी सिलेबस में रहेगा, यू मे बी लर्निंग. What I am teaching is embedded C, not your computer compilers. Okay. So ये embedded C नहीं है, right? You all know this is not embedded C. This is normal. So when you write a program, if you can run the program. When you run the program, see it is executing. तो आपका result आ गया इधर hello world, program terminated. So you can do all these things. तो उसने व्हाट ही सेड, यहाँ डीबग भी कर सकते हैं आपको. देखो ये सेड दैट यू कैन रन द प्रोग्राम इन डीबगिंग. तो डीबगिंग जैसे ही चालू किया, ये बोल रहा है कि भाई स्टार्ट करना है, पॉज करना है, कंटिन्यू करना है, स्टेप ओवर, स्टेप इनटू, स्टेप आउट. मतलब एक प्रोग्राम को कितने वे से रन कर सकते हैं. बिना डीबग में क्या हो रहा है, आप वन शॉट में रन, दैट्स व्हाट यू डिड. लेकिन द मोमेंट जैसे आपने डीबग ऑप्शन चूज किया, तो आपको कितने ऑप्शंस दिया, स्टार्ट मतलब रन करो, या पास कंटिन्यू करो, स्टेप ओवर करो, स्टेप इनटू करो, स्टेप आउट करो. ठीक है, मतलब मेरे पास एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम को व्हाट डू यू मीन बाय रन, स्टार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय पास, नहीं रुको, और अब बोल रहे कंटिन्यू करो, अब बोल रहे नहीं स्टेप ओवर करो, और स्टेप इनटू करो, स्टेप आउट करो. ये सब इंटरेस्टिंग थिंग है. एक प्रोग्राम को कितने तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सिंपल रन मीन्स व्हाट, आपके हाथ में कुछ नहीं, नो, आपने बोला सीपीयू को भाई यू एग्जीक्यूट, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, सो दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग, आप थोड़ा उस पर ध्यान देना चाहिए. ओके, इसके बाद अब इसमें और क्या फीचर्स है. ही आल्सो सेड दैट कि एक्चुअली समवेयर मुझे देखना पड़ेगा. There is some feature called इसमें extra compiler flags, ऐसा ना कुछ. he has given some options. If you choose this and if you add those extra compiler features, so what it shows is that ये जो program आपने जो लिखा है, when you compile it,
what actually happens back end में क्या होता है, मतलब assembly language I told you finally machine language create होता है ना, वो भी आप यहाँ देख सकते हो, वो सब दिखाएगा आपको। दैट इज वाई आज मैं आपको, आज एटलीस्ट आज के लिए, नेक्स्ट वीक से मैं आपको आर्डिनो में सी लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, लेकिन आज के लिए मैं आर्डिनो नहीं ले रहा हूं। क्यों नहीं ले रहा हूं? अगर मैं आर्डिनो लिया, अगर आपको एम्बेडेड सी का ऐसा ये सेक्शंस पढ़ाने के लिए, तो आर्डिनो काफी सारे चीज को हाइड कर देता है, ठीक है। फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि ये हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज कैसा बनता है, मशीन लैंग्वेज कैसा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वही चीज ये जो ऑनलाइन जीडीबी में ये आप देख सकते हो। अब ये सिंपल हेलो वर्ल्ड अगर आपने कंपाइल किया तो वो उसका मशीन लैंग्वेज कैसा रहता है, असेंबली लैंग्वेज कैसा रहता है, व्हाट इज द साइज ऑफ द कोड, ये सारे फीचर्स आप देख सकते हो। दैट इज वन थिंग। यही चीज आपको, क्योंकि इस कंपाइलर में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे तो थोड़ी ये कंपाइलर यूज करना है, हमें तो कंप्यूटर के लिए थोड़ी प्रोग्राम लिखना है, हम लोग को लिखना है अपना डिवाइस के लिए, ठीक है। बट एनी हाउ, बिफोर वी गो अबाउट दिस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट, चलो एक प्रोग्राम है, वो एक क्लासिकल प्रोग्राम है जिसमें मेन फंक्शन है, ठीक है, देन उसके बाद करली ब्रैकेट्स है एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ए सिंपल a classical example of a program, ठीक है, understood? Now what I am asking is, if you write this program, such a small program, where this program is stored in your computer? That's what is my today's topic, right? Another half an hour to 45 minutes is about what happens, right? That's the topic, I have posted in your WhatsApp group. What do you mean by sections and subsections of your program? ठीक है, that's what we are interested in. So ठीक है, आपने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, you have main and one instruction closed, simple 2 lines का program. What happens if you compile it? Where this will store? एग्जीक्यूटिबल फाइल बनता है, हार्डवेयर स्टोरेज पे सेव होता है। Okay. और anybody else? कुछ तो करेगा तभी रैम में स्टोर होगा। ओके, और कुछ तो बोलो, आपका हो गया ये? मुझे डाउट था, इसलिए मैंने ये स्लाइड बनाया, क्योंकि मुझे लग रहा था यार तुम सब लोग इतने 2-3 साल से 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड से ही प्रोग्राम लिखते हो, या भी इंजीनियरिंग में भी थोड़ा सी लैंग्वेज पढ़ाना शुरू हो गया होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार राव सर आप क्या पढ़ा रहे हो, ये तो सब हमको आता है। इसलिए मैंने स्लाइड बनाया, क्योंकि मुझे सुनना था आप लोगों से कि 2 लाइन का मैंने प्रोग्राम लिखा है, आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू। मुझे कम से कम एक हाफ एन आवर सुनना है आपसे, ये प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद होता क्या है कंप्यूटर के अंदर। It's stored into the RAM and then running whenever we want. We can also store it inside. तो जब एग्जीक्यूट करेंगे तब रैम में आएगा ना, वैसे तो खाली पड़ा होगा स्टोरेज So, में एग्जीक्यूट Not करना। in exe file, hard disk में store होते हैं, जो RAM पे जाएगा। सेकेंडरी में रहेगा, जब रन नहीं होता फिर जब रन करना रहेगा तब प्राइमरी में मिलेगा। So source code आप जो बनाते हो आपके लैंग्वेज में, that is converted into object code, that is machine code. फिर वो execute होता है because machine code computer understand करता है, तो machine code execute करता है प्रोग्राम को, then it is again converted back to source code and up. नहीं ठीक है, देखो दैट्स द इंटरेस्टिंग थिंग। इसलिए मैंने आज जो है, मुझे आपको ये फूल नहीं करना था, इसलिए मुझे कोई आर्डिनो दिखा के देखो हो गया। आई डू नॉट वांट टू टीच दोस व्हाट अदर्स आर डूइंग, आई वांट टू टीच यू मोर टेक्निकल डिटेल्स। इसलिए मैंने जैसे ही आईआईटी बॉम्बे का वो मैथमेटिक्स डाला, 10-15 लोग एग्जिट हो गए। प्रॉब्लम ये है, लोगों को कुछ कॉम्प्लेक्स
चीज होता है, भागो फिर वहां से। मतलब इतना मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों का, ठीक है यार तेरे को समझ में नहीं आया कुछ भी आया तो सुनने के लिए भी एक्सेप्टेबल, तो ग्रुप में रहने में क्या जाता है ना, ठीक है यू डोंट सॉल्व इट, बट कोई तेरे को प्रॉब्लम्स पोस्ट कर रहा है वो भी फ्री में पकड़ में, तेरे को कोई मटेरियल दे रहा है, देखना तो तेरे एग्जिट क्यों हो रहा है ना, यू आर ए स्टूडेंट नो, when you are a student you are shown interest, you have joined a group and I am posting some information, देखो ये प्रॉब्लम्स देखो, तो ये इरिलेवेंट हो गया क्या तुम फिर तुम नालायक आदमी हो तुम। एक तुमको आईआईटी में क्लियरली लिखा है आईआईटी बॉम्बे का एमटेक लेवल का प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो मॉडलिंग करते हैं वो भी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट्स करते हैं। अब तुम उसको देख के भी है मैं भाग रहा हूँ, डिड आई फोर्स यू टू कम हियर, पे फॉर सम फीस और डू कुछ, मतलब प्रॉब्लम्स देखो ये तो नहीं सुनना है मतलब क्या है कि वो जैसा वो फिल्म में रहते हैं ना ऑल इज वेल, ऐसा थोड़ी होता है ऑल इज वेल, you should understand all is well is not good, Arduino is not good, I am telling you। वो हाइड करता है काफी सारे चीज, जैसा आप वो नो कोड वगैरह ज्यादा फैंसी चीज लेंगे तो आपको हाइड कर रहा है, दैट इज नॉट गुड एज ए प्रोग्रामर, आई एम टेलिंग यू। आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस में आप जाके देखो, प्रोग्रामिंग मीन्स नॉट यूजिंग द फैंसी थिंग्स, जो इसलिए मैं आपको डॉक्टर मुकुल चांदोड़कर इज माय गाइड, पीएचडी गाइड, आई एम प्राउड, though is an electrical fellow, is a hard code programmer, जिससे मैं 10 साल उनके साथ बैठ के काम किया। So we understand कि what do you mean by the root level programming। The computer science student point of view, you should not use those fancy things। जितना डेप्थ में जाओगे उतना आपके लिए लर्निंग के लिए अच्छा है, ठीक है, बाद में इंडस्ट्री में जाने के बाद वो इंडस्ट्री जो टूल यूज करता है दैट इज ओके, बट नॉट एट द टाइम ऑफ लर्निंग। लर्निंग में शॉर्टकट मेथड्स नहीं चाहिए, अंडरस्टूड? ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज आपके सामने एक छोटा सा 2 लाइन का कोड है, बट दिस कोड जिस पे आपको एक, मुझे कोई घाई नहीं है कि भाई फटाफट ये प्रोग्राम है, ये नो ये वेरिएबल्स है, ये डेटा टाइप्स है, ये ऑपरेटर्स है, ये पॉइंट, ये तो हर ट्यूशन मास्टर भी पढ़ाएगा आपको स्टेशन में, बिकॉज दैट्स नॉन इंजीनियरिंग, ठीक है, इसलिए वो इवन डिप्लोमा डिग्री आईटी है, सब जगह लैंग्वेजेस पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं, बट आई एम सेइंग यू ऑलवेज लुक द प्रोग्रामर एज ए इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव, ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो है भले 2 लाइन इधर लिखा है, लुक एट एज ए इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव। व्हाट इज इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव हियर, कि ये प्रोग्राम मैंने लिखा है, फर्स्ट मैं आज सुबह से क्या बता रहा था आपको, व्हाट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर, व्हाट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटेशनल यूनिट्स, व्हाट आर द कंपाइलर्स, इतना मैंने 2 घंटे से आपको पढ़ा है। तो उसके बाद व्हाट आई एम सेइंग कि चलो आपको ये 2 लाइन का कोड दिया, अब ये कंपाइलर कंपाइल कर रहा है, सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगल बोर्ड कंप्यूटर, मैं आपको पहला एग्जांपल कंप्यूटर का ही एग्जांपल दे रहा हूँ जो आप हर रोज यूज करते हो, ये 2 लाइन कोड लिखा है, सो ये कोड कंपाइल होने के बाद व्हाट हैपेंस, आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है। अब आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या बताया था, प्रोग्राम इज डिफरेंट, डेटा इज डिफरेंट, ठीक है, इसमें प्रोग्राम क्या है, डेटा क्या है, इट इज डिफरेंट, अंडरस्टूड? सो देयर इज समथिंग कॉल्ड डेटा, समथिंग कॉल्ड प्रोग्राम। सेकंड, मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, हाउ मेनी मेमोरीज आर देयर, आपका मैं इसका बात नहीं कर रहा, आपका कंप्यूटर का बात कर, आपका कंप्यूटर पे मेमोरी कितने टाइप्स के, ठीक है, दिस इंटरेस्टिंग थिंग। आपका प्रोग्राम में आप व्हाट एवर इज द प्रोग्राम यू आर राइटिंग, इसमें कितने सेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो आपने अदरवाइज फिर वो क्यों दे रहा है कि कोई चीज जो है आप मेन के पहले लिखते हो, कोई चीज मेन के बाद लिखते हो, यू अंडरस्टैंड स्कोप, दे कॉल्ड स्कोप समथिंग लाइक, तो स्कोप इज डिफरेंट। तो इसमें प्रोग्राम के अंदर हाउ मेनी सेक्शंस आते हैं, अंडरस्टूड? तो ये है मेरा टॉपिक,
एज ए इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव, नॉट जस्ट फॉर बाय हार्टिंग, कोई भी पूछा तो ओ फटाफट बोलते जो, ऐसा नहीं। आप सोचो कि what I am speaking. Okay, so this is just this program. मैं आपको मेरा स्लाइड्स बताने से पहले मैं आपको दूसरा कंपाइलर दिखाता हूं, ठीक है, जो आईडी है, मतलब जो हम लोग जो सीपीयू यूज करते हैं वो कंपाइलर कैसा दिखता है आपको, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर कंपाइलर्स ओनली। ये आईडी आप देख लीजिए, जो एक्चुअली मैं ये कंपाइलर आई वांट टू टीच फॉर माय आईओटी स्टूडेंट्स। इस सेमेस्टर उन लोग के लिए ये सिलेबस है, ठीक है। बट मैं आपको ये कंपाइलर का जगह नेक्स्ट वीक से आपको आर्डिनो सिखाऊंगा, क्योंकि ये कंपाइलर थोड़ा कॉम्प्लेक्स इन नेचर, तो वो हम लोग थोड़ा 2-3 महीने के बाद, पहले आर्डिनो में आप थोड़ा फील गुड, फिर थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, हम लोग रूट लेवल पे जाएंगे। ओके, अब ये कंपाइलर पे, ये भी कंपाइलर है, सी कंपाइलर है, इस पे भी देखो सेम है, हम लोग मेन प्रोग्राम सी वॉइड मेन सेम है, सी प्रोग्राम ही और कुछ नहीं है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, सिंपल एज दैट। बट यहाँ अभी मैं आपको बताऊंगा, आप वहां आप रन कर पाए, इधर मैं रन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसमें सीपीयू है ही नहीं, ठीक है, मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा वहां से बोर्ड पे। बट व्हेन आई कंपाइल इट, चलो मैं कंपाइल करके देखता हूँ। व्हेन आई कंपाइल इट, देखो अभी आपको कुछ वो दिखा रहा है। कंपाइल करने के बाद वो क्या आपको बता रहा है, फर्स्ट वो आपको ये बता रहा है कि भाई मैंने सीपीयू जो है कुछ ये 8 मेगा सम सीपीयू यूज किया। व्हाट डज इट मीन? आपको जो पहले वो जो सी में लिखा था सीपीयू बताया था उसने नहीं बताया, लेकिन ये बार बार बता रहे कि भाई मेरा सीपीयू अलग है। एवरी टाइम इट इज टारगेट स्पेसिफिक, ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। हम यहाँ जब लिखते हैं वो एक स्पेसिफिक टारगेट के लिए लिखता है, वो टारगेट चुनना बहुत जरूरी है। सेकंड आपको क्या बता रहा है, वो टारगेट का स्पीड क्या है, इसका मतलब है इट्स ए चॉइस। आपको उस टारगेट को कितना स्पीड से चला रहे हो इज ए चॉइस, वो भी आप चुन रहे हो, ठीक है। अब देखो मॉडल, इंटरेस्टिंगली ये क्या बता रहा है आपको, प्रोग्राम का मॉडल, मतलब आप जो भी प्रोग्राम आप बनाया यहाँ उसके उसने एक मॉडल है। दैट्स अनदर इंटरेस्टिंग पैरामीटर जो आप जनरली नॉर्मली प्रोग्राम लिखते वक्त आप मॉडल स्पेसिफाई नहीं करते हो, लेकिन यहाँ मॉडल होता है मॉडल, ठीक है। सो लीव ऑल दीज थिंग्स। लास्ट में आपको और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आपको ये बता रहा है कि वो जो स्टैक जो है ये कुछ बता रहा है आपको, आप देख लो, वो बता रहा है कि आपको डेटा स्टैक जो है इतना उसने यूज कर लिया, ओके। और रैम जो है ग्लोबल वेरी के लिए उसने अभी इतना यूज नहीं किया, व्हाटएवर इतना है। हार्डवेयर स्टैक जो है वो कुछ तो इतना बता रहा है, और हीप जो है वो इतना है करके बता रहा है, और ई स्क्वेयर प्रॉम जो है इतना बता रहा है, और प्रोग्राम जो है इतना 73 वर्ड्स, मतलब 1.8% उसने यूज किया। सो डू यू अंडरस्टैंड, ये जो आपको बता रहा है, आपने सिंपल सी प्रोग्राम लिखा है, हेलो वर्ल्ड या व्हाटएवर, बट वो आपको आपका प्रोग्राम को इतना पोस्टमार्टम करके बता रहा है, आपने हीप इतना यूज किया, स्टैक इतना यूज किया, प्रोग्राम मेमोरी इतना यूज किया, रैम इतना यूज किया, ठीक है। टारगेट डिवाइस आपका ये है, ऑपरेटिंग स्पीड इतना ये है, कम से कम 10 पैरामीटर्स विथ बाइट्स काउंट करके आपको बताया कितने रिसोर्सेस आपने ऑलरेडी यूज कर चुके हो। अंडरस्टूड? ये नॉर्मली हम लोग कंप्यूटर कंपाइलर्स पे हम नहीं करते, सर कर सकते हैं उधर भी, वो भी कैलकुलेट करके दे सकते हैं, देयर आर सम कमांड्स इट विल टेल यू, वो भी है, बट वी डोंट बॉदर दिस। व्हाई वी डोंट बॉदर? हार्ड डिस्क है, बहुत बड़े टेराबाइट्स ऑफ मेमोरी है, और भी चाहे तो क्लाउड है, व्हाटएवर, इसलिए कोई इश्यू नहीं। लेकिन यहाँ ये सबसे बड़ा इश्यू है। तो आप बिफोर राइटिंग द प्रोग्राम आल्सो, मैं आपको बताता हूँ, देखो अभी ये तो प्रोग्राम पहले से लिखा है, बट अदरवाइज, ठीक है, मैं आपको देखो प्रोजेक्ट, मैं मतलब प्रोग्राम लिखने से पहले मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। चलो मैं कॉन्फ़िगर बताता हूँ। कॉन्फ़िगर क्या होता है? Okay, now if you see configuration of my program, how small it may be, I am saying, for example, compiler.
सो आई हैव टू से, आई हैव टू सेलेक्ट. देखो अभी इतने सारे, मैं आपको ऑलरेडी बताया, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टारगेट डिवाइसेस आर देयर. तो यू मस्ट सेलेक्ट आपको कौन सा. भले ही मेरा कंपाइलर सेम है, मैं कोई दूसरा कंपाइलर को दूसरा आईडी नहीं ले रहा हूं, इसी कंपाइलर में भी आई हैव ए डिफरेंट टारगेट डिवाइसेस. सो टारगेट चुनना है, फिर मैं स्पीड चुनना है, फिर उसके बाद मेमोरी. मैं मॉडल बताया था कि यूर प्रोग्राम का मॉडल क्या है, स्मॉल है, ह्यूज है, लार्ज है, टाइनी है. यू हैव टू चूज ए मॉडल. एंड देन ऑप्टिमाइज, डू यू वांट टू ऑप्टिमाइज योर कोड. And then program type, features, different types of variables you are interested in, printf, scanf statements. RAM आपको stack कितना allocate करना है, heap कितना allocate करना है, internal RAM कितना available है, your variables में भी so ये सारे जो है आपको configuration of a program which you are writing. मतलब जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो, you have a choice of choosing the entire program model. हर मतलब एक प्रोग्राम में कितने सेक्शंस होते हैं. आपको लग रहा है कि दिस इज जस्ट ए सिंपल 2 लाइन कोड, ठीक है, बट इट्स नॉट 2 लाइन कोड. इसको अगर पोस्टमार्टम किया ना, कम से कम 15-20 पैरामीटर्स निकलते हैं इस पे. इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए इसने जो कंपाइल किया, इसमें स्टैक होता है, हीप होता है, प्रोग्राम मेमोरी होता है, डेटा मेमोरी होता है, ठीक है, काफी सारे होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होता है, रीराइटेबल होता है, रीड ओनली होता है, सो मेनी, डायनेमिक होता है, स्टैटिक होता है, सो मेनी पैरामीटर्स आते हैं एक प्रोग्राम का पीछे. अंडरस्टूड? एवरी प्रोग्राम. बट जनरली इन कंप्यूटर में वी डोंट बॉदर, बट यहां जो है वी नीड टू वरी, क्योंकि एक टाइम आपको ऐसा आएगा कि वो खुद ही बताएगा, यार मेरे से नहीं हो पा रहा, आई एम अनएबल टू डू दैट. तब जाके आपको समझ में आया कि यार मुझे चेंज करना पड़ेगा, मेरा प्रोजेक्ट हो नहीं पा रहा है. सो व्हाट शुड आई डू? समथिंग यू शुड नो योर लिमिटेशंस. हो सकता है आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, नहीं बैठेगा. आपका हो सकता है प्रोग्राम मेमोरी ज्यादा है, हो सकता है डेटा मेमोरी कम है, आपने ज्यादा फंक्शंस लिखा है तो आपका स्टैक कम पड़ रहा है, व्हाटएवर. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड मेमोरी जो है. आपको लोग लग रहे मेमोरी मींस रैम. नो, मेमोरी इज नॉट जस्ट ए रैम, मेमोरी इज आल्सो डिफरेंट टाइप्स. ठीक है. सो इट्स ए इंटरेस्टिंग टॉपिक. आई नो अभी आपको थोड़ा टू अर्ली है, बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस कि प्रोग्राम इज नॉट जस्ट ए सिंटैक्स, इट्स मच मोर. एज ए इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव आपको प्रोग्राम को देखना पड़ेगा. ओके, ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट इज योर प्रोग्राम. जो जैसा आपने जस्ट नाउ यू हैव सीन, योर प्रोग्राम इज व्हाट. अभी आपने एक सिंपल सी प्रोग्राम देखा है, बट हाउएवर उस प्रोग्राम जो है अभी आपने देखा, उसमें कितने सेक्शंस है. नॉर्मल सी प्रोग्राम में एक होता है कॉल्ड टेक्स्ट सेक्शन, एक होता है डेटा सेगमेंट, एक होता है डेटा सेगमेंट में भी इनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट होता है, अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट होता है. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड हीप, देयर इज कॉल्ड स्टैक. Every simple, even a simple C program consists of at least these many sections. Okay. So what is that I am talking? I am talking about your memory organization. आप ये प्रोग्राम भले ही 2 लाइन का लिखा है, but how your memory is allocated, how your in your computer. I am talking about computer only. अभी please remember. ये अभी आपको कोड डिवीजन में भले ही दिखा है मैंने, बट स्टिल इट इज एप्लीकेबल इन बोथ द केसेस. उतना ही है कि कंप्यूटर पे वी डोंट बॉदर, दैट्स ओनली आई एम सेइंग. बट इन एम्बेडेड में वी हैव टू बॉदर अबाउट ऑल दीज थिंग्स. दैट्स व्हाट आई हैव शोन यू, दैट वी कॉन्फ़िगर आवर प्रोजेक्ट. कंप्यूटर में हम किधर कॉन्फ़िगर करते हैं, जो डिफॉल्ट है उसी पे हम चलाते हैं. ओके. सो व्हाट इज दिस मेमोरी? मेमोरी मीन्स जो आपको मेमोरी क्या मालूम है आपको कंप्यूटर के बारे में? आपको कितने टाइप्स ऑफ मेमोरी है कंप्यूटर पे आपको मालूम है? हाँ, ओके.
So both are correct. Primary memory होता है, secondary memory होता है. He said, yeah, RAM, ROM, cache. Okay. So कंप्यूटर पे बेसिकली ब्रॉडली क्लासिफाई करना है तो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, करेक्ट. फर्दर क्लासिफाई करना है समझो. सेकेंडरी मेमोरी हम किसको बोलते हैं? हार्ड डिस्क. So hard disk means magnetic storage. It's not a semiconductor. So magnetic storage is a secondary memory, which is high in size. Volume wise वो सबसे बड़ा है, terabytes में रहता है. Okay. Huge memory in your computer is a secondary, which is a hard disk, which is a terabytes. Is that clear? ठीक है, वो उसको छोड़ दो. उसके बाद primary memory. Primary memory is what? RAM. RAM two types होते हैं. The static RAM and dynamic RAM. Okay. RAM is two types, static and dynamic. तो आपका सारे programs जो है first they are stored in the your dynamic RAM. फिर उसके बाद वो static RAM. Static RAM is also called as a cache. Cache is again two types होते हैं, L1 cache and L2 cache. L2 cache means on board होते हैं, L1 cache means inside the CPU होते हैं. और CPU के अंदर वापस CPU के अंदर again you can have a registers where you can store the program and data. ठीक है. अब have you understood कितने types का memory हो गया? Your memory you are having तो CPU के अंदर रजिस्टर्स, ठीक है. बाद में CPU के अंदर L1 कैश, फिर बाद में L2 कैश which is there on board, ठीक है. बाद में आपका this is static RAM, then आपका dynamic RAM, okay. Then your secondary storage, okay. So सब कुछ मेमोरी है, everything is memory only, okay. But ये एक पिरामिड है. Why pyramid? क्योंकि ये सबसे बड़ा साइज है, साइज वाइज ये सबसे ज्यादा है. ये आपको आज ऑन टुडे आज आपको ये टेराबाइट्स में 1 TB 2 TB ऐसे ही मिल जाता है. फिर डायनेमिक रैम मीन्स आपका कंप्यूटर पे मेजर जो मेमोरी जो आप जो बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, वो आपका डायनेमिक रैम है. वो कितने आजकल 8 GB ऐसे ही मिलता है, 8 GB 16 GB आपको नॉर्मल हो गया आजकल. फिर आपका कैश which is a static RAM not dynamic RAM, वो MB में MB megabytes which is there on your board, computer board के ऊपर. फिर आता है कैश, ये भी static RAM है but within the CPU which is not in megabytes, it is in kilobytes, ठीक है. फिर वापस आता है CPU के अंदर जो रजिस्टर्स है, स्टोरेज एलिमेंट्स, वो भी स्टैटिक रैम ही है लेकिन वो फ्यू बाइट्स है, ओके. अब टोटल कितना हो गया आपका साइज वाइज आप देखोगे, ठीक है. ये परफॉर्मेंस और ये साइज, सबसे हाईएस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस किसके वजह से मिलता है? CPU रजिस्टर्स की वजह से. ये सबसे फास्ट है. जो भी अगर क्विकली करना है तो आपका प्रोग्राम हो डेटा हो इसके अंदर रहना चाहिए, बट सबसे स्मॉल फ्यू बाइट्स है. फिर उसके बाद आता है आपका CPU के अंदर कैश रहता है, स्टैटिक रैम थोड़ा ज्यादा रहता है, किलोबाइट्स में रहता है.
एडवांस्ड जैसे कंप्यूटर्स के अंदर। उसके बाद आता है, अब ये खत्म हो गया, ये फिर बाहर आ गया, मदरबोर्ड के ऊपर कैश है, आप few MB आप डाल सकते हो स्टैटिक रैम, इट्स नॉट डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम। फिर इसमें स्टैटिक रैम, सर डायनेमिक रैम बट प्राइमरी मेमोरी, ये जीबी में है। तो ये हो गया सेमीकंडक्टर, ये है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मीन्स sequential access, semiconductor means simultaneous access. What is the difference between sequential access and simultaneous access? How a CPU reads the data in hard disk and how a CPU reads from a semiconductor memory. Do you know that? And semiconductor device would be simultaneous. Means what? Sequential means what? Hard disk is sequential means what? Sequential means it will have a hierarchy and it will read one by one, whereas simultaneous. ठीक है, आपका घर पे कभी, आई डोंट नो, आपका जमाना ही चेंज हो गया, आपने कभी कैसेट देखा है? टेप रिकॉर्डर में कैसेट, ठीक है, कैसेट, आप गाने का कैसेट आपने डाला है, ठीक है, अरे अभी आपको गाना सेलेक्ट करना है, आप क्या करोगे? आपको एक गाना सुनना है तो क्या करोगे? कैसेट को फॉरवर्ड बटन, रिवर्स बटन, आगे पीछे दौड़ाते हो ना रील को, फिर तब जाके एक स्पेसिफिक लोकेशन पे अभी रुको, अभी प्ले बटन दबा। जब आप प्ले बटन दबाए तो होता क्या है, ऊपर एक हेड रहता है, वो हेड आके वो टेप के ऊपर बैठ जाता है, ठीक है, अंडरस्टूड? दैट्स हाउ ए मैग्नेटिक स्टोरेज में कैसा रहता है आपका, योर डेटा जो है, द डेटा इज स्टोर्ड इन ए कैसेट और दैट फिल्म जो सब मेटल ऑक्साइड से कोटेड है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। और वो कैसेट के ऊपर जो भी डेटा है, वो अगर आपको सेलेक्ट करना है स्पेसिफिक गाना के स्पेसिफिक डायलॉग, कोई स्पेसिफिक म्यूजिक सेलेक्ट करना है, तो आपको करते क्या हो, कैसेट को दौड़ाते हो ना, रील को आगे पीछे घुमा के ऐसा, फिर या साइड चेंज करो, सब करते हो ना, ठीक है। सिलेक्शन कैसा कर रहे हो? सिलेक्शन फिजिकली कर रहे हो ना, अब घुमा रहे हो ना आगे पीछे आप। नंबर 1। नंबर 2, जब गाना प्ले होता है, हेड जाके टेप के ऊपर बैठता है ना, ठीक है, मतलब हेड के नीचे जो है वो उतना ही रीड कर रहा है ना, वो ना आगे ना पीछे नहीं है ना, अंडरस्टूड? अब मुझे आप एक गाना प्ले किया है, नहीं यार मुझे पहला गाना चाहिए, तो आपको क्या होगा, वापस घुमाना पड़ेगा, नहीं लास्ट गाना चाहिए, वापस घुमाना पड़ेगा, नहीं वेरी नेक्स्ट गाना चाहिए, ठीक है, इमीडिएटली मिल जाएगा। उसका मतलब क्या हो रहा है, एक्सेस कैसे हो रहा है, गॉड नोस। अगर जिस जगह आप गाना प्ले कर रहे हो, ठीक है, जो गाना आपको चाहिए वही प्ले कर रहे हो, तो इमीडिएट एक्सेस है। लेकिन आप यहां हो, अभी आपको लास्ट गाना चाहिए, तो फिर उसको दौड़ाना पड़ेगा, वेरी नेक्स्ट है तो थोड़ा फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो एक्सेस जो है रैंडम एक्सेस नहीं है, इट डिफर्स एवरी टाइम। आपको जो डेटा चाहिए वो कब मिलेगा आपको ही मालूम है, यू डोंट नो, अंडरस्टूड? कैसेट में तो हार्ड डिस्क में भी यही होता है, हार्ड डिस्क इज आल्सो मैग्नेटिक स्टोरेज। हार्ड डिस्क में भी हेड रहता है, वो हेड भी जाके वो उसके ऊपर प्लेट के ऊपर बैठ जाते हैं, और वो फिर वो रीड भी बिट बाय बिट ही करता है, वो 1 बिट एट ए टाइम, ठीक है, बाइट वाइज, वर्ड वाइज, 32 बिट वाइज ऐसा रीड नहीं करता है, 1 बिट एट ए टाइम इट रीड्स। इज इट क्लियर? चलो अभी सेमीकंडक्टर पे आते हैं। मेरे पास मेमोरी है, रैम है, ठीक है, चलो अभी 8 GB रैम है या 1 GB रैम है, 1 KB रैम, व्हाटएवर। मुझे पहला लोकेशन एक्सेस करना है, कितना टाइम लगेगा? चलो एक 5 माइक्रो सेकेंड। दूसरा लोकेशन फिर भी 5 माइक्रो सेकेंड। लास्ट लोकेशन
फिर भी 5 माइक्रोसेकंड, बीच में वाला फिर भी वो। आप जो लोकेशन बोलो वो लोकेशन में आपको रीड करके दिखाता हूँ। अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू रीड और राइट इज सेम। आप वो 8 GB रहने दो, 1 GB रहने दो, 1 TB भी रहने दो, whichever the location you tell me, I will take the same amount of time to read or write. इसमें कोई अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऐसा कुछ नहीं। वही तो, इससे भी फास्ट चाहिए तो टेक्नोलॉजी बदलो, कोई दूसरा मेमोरी खरीदो। 5 माइक्रोसेकंड को 1 माइक्रोसेकंड में रीड करके देगा, लेकिन हर मेमोरी लोकेशन उतना ही स्पीड से आपको रीड करके देगा। इट वोंट डिफर टू लोकेशन टू लोकेशन, नंबर 1। नंबर 2, रैंडम एक्सेस का मतलब क्या है? वो आपको 1 बिट रीड नहीं कर रहा है, 8 बिट रीड करके दे रहा है, या 16 बिट, चलो पूरा 16 बिट, 32 बिट चाहिए तो 32 बिट ले। एंटायर डेटा वर्ड जितना आपका विड्थ है उतना विड्थ के साथ दे रहा है। लेकिन ये हार्ड डिस्क में क्या हो रहा है, 16 बिट चाहिए तो 16 टाइम्स आपको 1 बिट, हाँ चलो दूसरा बिट लो, तीसरा बिट लो, ऐसे 16 टाइम्स आपको रीड करके दे, 16 टाइम्स। यहाँ 1 टाइम में 16, 1 टाइम में 32, 1 टाइम में 60। अंडरस्टूड डिफरेंस बिटवीन? एनी क्वेश्चंस? So SSD कैसे काम करता है? हाँ, SSD एसएसडी मैंने इतना कल बताता हूँ, मैंने स्टडी नहीं किया उसका। सॉलिड स्टेट ड्राइव तो स्टडी करके बताता हूँ हाउ इट वर्क्स। बिना स्टडी का कमेंट करना अच्छा नहीं, बट इट इज नॉट हार्ड डिस्क। SSD is not hard disk. Understood? So anyhow, what is the topic here? The topic is that your program consists of at least minimum 5 sections. जो आपको मैं छोटा सा भी प्रोग्राम दिखा है, बट बैक एंड में वो 5 पार्ट्स में टुकड़े टुकड़े कर देता है उसको, उस प्रोग्राम को। एक लाइन भी लिखा उसको 5 पार्ट में डिवाइड करता है। तो वो 5 पार्ट क्या है? वो 5 पार्ट ये है आपका 5 पार्ट्स। ओके, क्या कह रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? कैसा हटाने के? अच्छा हट गए। हाँ, सो आपका मेमोरी जो है, अब मैं आपको क्या बताया, आप जो भी लिखोगे इतने पे डिवाइड होगा। ये लोएस्ट एड्रेस है, ये आपका हाईएस्ट एड्रेस है, जो भी मेमोरी आपके पास अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये जो मैं हायरार्की बताया इधर, ये इधर एप्लीकेबल नहीं है, याद रखना। ये मैं क्यों बताया आपको, ये याद रखो, ये एक मेथड है आपका प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की। एग्जीक्यूट मतलब आप ये पिरामिड को याद रखो हमेशा, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है। ओके, आपका एक्चुअल प्रोग्राम और डेटा कहाँ है? हार्ड डिस्क में, इधर है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इधर, एप्लीकेशन प्रोग्राम इधर है, डेटा किधर, इधर, सब कुछ इधर ही है। ठीक है, जिस वक्त आपने कंप्यूटर ऑफ कर दिया आपका सब कुछ इधर ही है ना। जैसे ऑन किया तो क्या होगा, यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, यहां से यहां। ये फ्लो है। अंडरस्टूड? स्पीड बढ़ाने के लिए। अभी आप समझ सकते हैं ना, ये सबसे छोटा है, ये इधर बैठ नहीं सकता है। अंडरस्टूड? इधर नहीं बैठ सकता, इधर नहीं बैठ सकता, इधर नहीं बैठ सकता। मैं क्या कर रहा हूं, ये इसमें से एक बड़ा सा स्लाइस को, अभी आप केक समझ लेना, इसको एक बड़ा साइज को काट के इधर रखा है। अब इसको वापस काट के इधर रखा है, इसको वापस काट के इधर रखा है, इसको वापस काट के इधर। अंडरस्टूड? मुझे फाइनली मेरा कैपेसिटी कितना है, इतना ही, लेकिन इतना चाहिए तो मैं इधर से नहीं ले रहा हूं,
ये स्लाइसेस जो है इधर 5-6 पड़ा है, तो इसमें से अभी तुरंत इधर से ले लेता था, और इसको चाहिए अभी, मैं इधर नहीं चाह रहा हूं, इधर इधर 5 थे, इधर 10 पड़ा है ना स्लाइसेस, तो इधर से मैं ले लूंगा। इसको चाहिए, मैं इधर नहीं जा रहा हूं, इधर 20 पड़ा है, तो मैं इधर से उठाऊंगा। इधर नहीं है, फिर जक मार के इधर कुछ ऑप्शन नहीं, जाओ हार्ड डिस्क जाओ, क्योंकि सबसे स्लोएस्ट है। सो हम मिनिमम कोशिश करते हैं भाई हार्ड डिस्क में नहीं जाने का। हार्ड डिस्क में गया मतलब आपका कंप्यूटर स्लो हो गया, मिनिमम हार्ड डिस्क एक्सेस करना चाहिए। इसलिए मैक्सिमम कोशिश करते हैं यार अपना प्रोग्राम और डेटा यहाँ रहना चाहिए, और भी कोशिश करते हैं यार अपना प्रोग्राम इधर रहना चाहिए, और भी कोशिश करते हैं इधर रहना चाहिए, अरे हर चीज इधर ही रहना चाहिए। हम कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन स्किल्स इन राइटिंग द प्रोग्राम। मतलब प्रोग्रामिंग में आपको क्यों बड़े बड़े कंपनीज बड़े बड़े ऑफर्स क्यों देते हैं, क्योंकि आप एक डोंकी जैसा प्रोग्राम लिखा तो आपका प्रोग्राम सब इधर ही रहेगा। मतलब इतना बढ़िया हार्डवेयर देने के बावजूद भी आपका प्रोग्राम बार बार हार्ड डिस्क से एग्जीक्यूट हो रहा है। अंडरस्टूड? तो मैंने इतना खर्च किया, मैंने इतना अच्छा हाई परफॉर्मेंस बढ़िया सा सीपीयू आपको मोबाइल पे डाल के दिया, लेकिन मुझे परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपका प्रोग्रामिंग स्टाइल वैसा था, द वे यू हैव रिटन कोड वट एवर, इट्स नॉट यूजिंग सीपीयू का स्पेस। आपका जो भी लूप्स है, फंक्शंस है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, ब्रांच जो भी आप लिखते हो वो बार बार इधर जा रहे हो। अंडरस्टूड? प्रोग्रामिंग स्किल्स व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, तो परफॉर्मेंस चाहिए इसका डजंट मीन दैट कि चलो यार सीपीयू बदलो, नहीं वैसा नहीं है। मैं आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीपीयू देने के बावजूद भी मैं बता रहा हूँ आप गधे जैसे यूज कर रहे हो उसको यूज ही नहीं किया जिंदगी में, उसका फ्यूचर जो है, क्योंकि आप बार बार उसको आप समझा ही नहीं उसको, उस आपको ना आर्किटेक्चर समझा ना उसका फीचर समझा, आप हर चीज के लिए इधर आते हो, चाहे वेस्टेड योर मनी, वेस्टेड योर सीपीयू, सब कुछ रिसोर्सेस आप यूटिलाइज ही नहीं किया, आप समझा ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल आर्किटेक्चर को। दैट्स व्हाई इट्स बोथ आर इंपॉर्टेंट। एक जो है अच्छा फीचर्स का सीपीयू सिस्टम चाहिए, बट उतना होने के बावजूद भी अगर दिमाग ही नहीं लगा रहा है वो फीचर्स को यूज करना, पहले जमाना जैसे ही अगर आप ठीक है यूज कर रहे हो, फिर क्या मतलब? डायनामिक और स्टैटिक मेमोरी नो, टेक्नोलॉजी में फर्क है, बोथ आर सेमी ऑल। देखो ये हार्ड डिस्क छोड़ा ना, सब कुछ सेमीकंडक्टर, लेकिन ये आपका डायनेमिक है, बाकी सब स्टैटिक है। ओके, फर्क इन व्हाट सेंस? टेक्नोलॉजी में बोथ आर सेमीकंडक्टर। टेक्नोलॉजी में फर्क मतलब कैसा है? अब वो आईसी के अंदर मुझे डेटा स्टोर करना है, जीरो फाइनली जीरो और वन ना, इधर भी हर जगह जीरो ही वन ही स्टोर कर रहे हैं, लेकिन डायनेमिक मेमोरी पे मुझे जीरो और वन स्टोर करने का जो स्टाइल है, और स्टैटिक मेमोरी में जीरो और वन करने का स्टाइल जो है अलग है, अलग है। तो अभी आप समझ सकते हो कि भाई ये पिरामिड से भी आपको समझ में आ रहा है कि डायनेमिक मेमोरी ज्यादा है, स्टैटिक मेमोरी कम है, बट स्पीड वाइज स्टैटिक मेमोरी बेस्ट है, डायनेमिक मेमोरी स्लो है। अब यार उस देखो ये डिफरेंस। आपको ज्यादा मेमोरी चाहिए तो डायनेमिक मेमोरी पे जाओ, हाई स्पीड चाहिए स्टैटिक मेमोरी पे। कॉस्ट, स्टैटिक मेमोरी बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही कॉस्टली, इसलिए तो कम है, कम हम अफोर्ड नहीं कर पाते, तो सस्ते और ज्यादा मेमोरी चाहिए डायनेमिक मेमोरी पे चलो। सर टेक्नोलॉजी में फर्क है, आपको धीरे धीरे आ जाएगा हायर सेमेस्टर पे कि एक बिट को देखो, फाइनली इट इज बिट कॉस्ट, ठीक है? जैसे मुंबई में हम लोग घर मतलब क्या है, स्क्वायर फीट यही है ना। आप दादर पे जाओ, बांद्रा पे जाओ, चर्च गेट जाओ, या कौन सा वापी एंड ऑफ महाराष्ट्र है, वापी का पहले का धानु धानु वगैरह समथिंग। सो पीपल आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दैट प्लेस टू दिस प्लेस। या कुछ लोग हर रोज नासिक उधर से सूरत से भी आते हैं एवरी डे,
people are traveling from Nasik and Surat also. Every day, I think, I don't know how many trains are people are taking. But finally, it is a per square feet cost. वो कैलकुलेट करता है अगर समझो मैं इधर एक 30 I don't know how much it is, some 25,000 some cost is there. आगे का 40,000 स्क्वायर फीट, ओनली जो स्क्वायर फीट आप टाइल देख रहे हो उसका कॉस्ट है 30,000 समथिंग लाइक. तो फिर वो सोचता होगा नासिक से या दहानू से जो आता है, यार मैं तो खाली होल डे आई एम वर्किंग हियर ओनली, खाली सोने के लिए जाता हूँ रात को, फिर भाई आई एम वेस्टिंग माई मनी, खाली ट्रेन से जाके फास्टेस्ट ट्रेन से जाके आता हूँ उधर मस्त. अभी इधर फॉर एग्जांपल इन अंधेरी में रफली फॉर एग्जांपल 550 स्क्वायर फीट इज 2 crores. ठीक है, 550 मतलब ये रूम का आधा ये रूम का आधा इज 2 crores. तो अब ये चीज मैं वही दहानू या उस एरिया पे 10 लाख में कम से कम मैं 4 बेडरूम का बंगला बना सकता. ठीक है, 10 लाख में मस्त इतना बड़ा बिल्डिंग बन सकता. तो देन इट्स योर चॉइस ना, कि मतलब वैसे भी तुम दिन भर इधर ही काम करते हो, खाली सोने के लिए जाना है तो इधर 2 crore स्पेंड करना अच्छा है, उधर 10 लाख से थोड़ा गार्डन लेके रहना. इट इज अ चॉइस. Everything is cost. So similarly here, per bit cost. आपको फ्लैश मेमोरी खरीदना है, स्टैटिक रैम खरीदना है, एसडी का सॉलिड स्टेट ड्राइव लेना है, हार्ड डिस्क लेना है, पर बिट कॉस्ट. अभी पर बिट कॉस्ट कैलकुलेट करो. हार्ड डिस्क 1 TB हार्ड डिस्क कितने पे पड़ता है आजकल? 1 TB चलो 3,000, सो डिवाइड 3,000 रुपीज डिवाइडेड पे 1 TB. कैलकुलेट पर बिट कॉस्ट स्टोरेज. चलो अभी इस पे आ जाओ. 8 GB मेमोरी कितने पे आ रहा है आजकल? देखो अभी 8 GB 4,000. सो डिवाइडेड बाय 8 GB. फाइंड आउट व्हाट इज द पर बिट कॉस्ट ऑफ ए डायनेमिक रैम. नाउ अभी कैश पे जाओ. अभी आपको कैश बढ़ाना है, ये तो काफी ज्यादा जाएगा, ये तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव. सो लाइक दैट. सो पर बिट कॉस्ट फाइनल अंडरस्टूड. बट एट द सेम टाइम परफॉर्मेंस. आप ये सस्ते में ना करके ये लिया आपने, तो आप दहानों में है ना, हर रोज 3 घंटे जाने में 3 घंटे आने में. ठीक है, अब अंधेरे में है जैसा वॉकेबल डिस्टेंस, तो टाइम इज मनी. तो अब इसलिए सब रिचेस्ट पीपल, वो अंबानी से लेके अदानी से लेके टाटा सब इधर ही रहते हैं इंडिया में. सो टाइम इज मनी फॉर देम. तो इट्स ओके, छोटा ही वो व्हाटएवर, दे वांट टू स्टे हियर ऑन बिकॉज दिस इज अ बिजनेस हब. Whatever. So, is that clear? Okay. So, memory जो है, now I am talking about this memory. You have whatever is the program. What's the time? 1:30 हो गया. Okay. We have the memory, total memory, which we have divided into whatever the program I have shown you, printf statement is stored in this way. देखो stack में जाएगा, फिर heap रहेगा, BSS segment रहेगा, and then data segment रहेगा, text segment रहेगा. So your program is stored in these many sections. Okay. So what is text segment? Instructions and initialized constants. मतलब आपका प्रोग्राम में जो प्रोग्राम है, एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम एंड कॉन्स्टेंट्स, ये जाएगा टेक्स्ट सेगमेंट. मतलब मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, ये टेक्स्ट में जाएगा. ग्लोबल आपका प्रोग्राम में ग्लोबल वेरिएबल्स जो रहेगा, ग्लोबल मींस नॉट लोकल, ग्लोबल इज एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी, वो जाएगा आपका डेटा सेगमेंट में जाएगा. ओके. फिर आता है मतलब ग्लोबल में भी इनिशियलाइज्ड, अनइनिशियलाइज्ड. इनिशियलाइज्ड मींस पहले से आपने वैल्यू दे के रखा है, वो जाएगा डेटा सेगमेंट में. बट लेकिन अगर आपने नहीं दिया, नल है, कुछ दिया नहीं, यू डोंट नो, तो वो कंपाइलर अपने आप कुछ दे देगा, वो जाएगा बीएसएस सेगमेंट में. राइट. तो ये जाएगा. फिर डायनेमिकली एलोकेटेड मींस एट रन टाइम आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, वो खुद ही, जैसा आपने बोला I++, आपने कुछ जनरेट करो कुछ नंबर, वो जाएगा हीप में जाएगा.
ये हो गया आपका ये स्पेस। ये क्या हो रहा है, यहां तक आप लोअर एड्रेस पे शुरू किया आपने, याद रखो। लेकिन आपको और एक मेमोरी है कॉल्ड स्टैक, ये हमेशा हायर एड्रेस पे रहता है। मतलब आपको जितना भी मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस है आपका प्रोग्राम के लिए वो टॉप में रहता है, दैट इज कॉल्ड स्टैक। तो ये हमेशा उल्टा काम करता है। हीप और स्टैक जो है काम करने का स्टाइल उल्टा है। हीप जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, स्टैक जो है डिक्रीमेंट हो रहा है, हाई से वो लो पे आ रहा है, हीप जो है लो से हाई पे जा रहा है। बोथ आर ग्रोइंग, बट ये ऐसा ग्रो हो रहा है, ये ऐसा ग्रो हो रहा है। ठीक है, स्टैक किसके लिए यूज होता है? स्टैक इज फॉर व्हाट? जैसे आप ये सब समझ गए, स्टैक इज फॉर व्हाट? इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम नो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन यहाँ हो गया ना, टेक्स्ट सेगमेंट। नो सारे वेरिएबल्स आ गया ना आपका, टेम्पररी भी हो गया आपका, डायनेमिक। टेम्पररी मींस व्हाट? ये डायनेमिक के लिए हो गया ना। स्टैक जो है, स्टैक इज फॉर फंक्शन कॉल्स। ठीक है, whenever you call any function program, you know no functions calls, whenever we call a function, तो फंक्शन कॉल का रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो स्टैक में जाता है। क्यों? क्योंकि फंक्शन कॉल मीन्स व्हाट? मैं जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हूं, लेकिन मैं यहां से मेन प्रोग्राम्स में छोड़ रहा हूं, मैं अपना रास्ता ही बदल रहा हूं। मैं आई एम नॉट एग्जीक्यूटिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, मैं अपना यहां छोड़ के आई एम गोइंग समवेयर एल्स। तो जब व्हेन आई एम गोइंग समवेयर एल्स, देन आई हैव टू चैलेंजेस। एक जो है, इफ आई एम गोइंग समवेयर एल्स आई शुड कम बैक, मुझे रास्ता मालूम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रिटर्न एड्रेस। मतलब जहां से मैंने छोड़ा है, मैं और कहीं चला गया, मुझे रास्ता वापस मालूम होना चाहिए। So that is why whenever you call any function, return address is stored on the stack. That is the first thing it does. Any function call you call it, मुझे return आने का जो address चाहिए वो वहां store हो, नंबर 1। नंबर 2, जब मैं फंक्शन कॉल किया और कहीं जब जा रहा हूं, तो मैं जब वापस आऊंगा, मैं जो मेरा जो वेरिएबल्स जो है जो था वो वापस चाहिए मुझे। ऐसा नहीं कि यहां से गया तू मेरा घर खाली कर दिया, तुम ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, तुमको मैं जब गया वापस आया, मैं जो था वापस मुझे वो चाहिए। इसका मतलब क्या है? बिफोर आई गो एनीवेयर, मेरे जो भी था मेन प्रोग्राम का, तो स्टोर करके लॉकर पे डाल के ताला लगा के फिर जाऊं, फिर वापस आऊंगा, ताला खोलूंगा, सब वापस लूंगा, चलो चालू करो वापस नॉर्मल। फंक्शन कॉल इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट रिस्टोरेशन, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो कॉन्टेक्स्ट जब स्विच हो गया, रिस्टोर करने को भी आना चाहिए, अदरवाइज देन फंक्शन डजंट वर्क। क्योंकि आपने उधर जाके और कुछ कर दिया, आपने बदल दिया, फिर मेरा पहले का डेटा चला गया, देन मीनिंग क्या है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करने का? मेरा तो मतलब ही नहीं रहा फिर। So I do not want to lose my information. So they are important. Understood? Okay, so I think we are already late, but let me conclude that. So ये थोड़ा आप लोग वापस स्टडी कर लो as a engineering perspective. So like I was saying that your memory जो है, again, like I said, different sections. Second thing you should remember is there are certain memory which goes to the static memory. There are certain things which goes to the dynamic memory. ये भी आप लोग थोड़ा देखो, because I told you performance point of view it is different. Static memory is a very fast, dynamic memory थोड़ा slow है. So that way also your memory layout is different for a program. And then ये थोड़ा आप पढ़ सकते हो नेट पे भी, like I was telling कि when you write a program, for example global variable and pointers are declared outside the scope of the main functions, because of which they are stored in the read-write part of the initialized data segment. But global variable so and so is declared with the keyword constant, and hence it is stored in the read-only part of the initial. That means जो चीज आपको constant है, that means you are not going to modify. So that is called read-only. But जो variable जो है you are going to modify, then that is called read as well as write, both.
So that is called access rights, right? किसी location को मुझे modify करना है नहीं करना है, that depends on the type of variable you are defining. When you say constant, that means it's read only. Okay. So that way it is different. Text segment means your program. Actual program is always stored in the RAM space, a binary file which is used to execute the program, the RAM space. And text segment is on read-only permission. So these are all called access rights. And then data segment, right? So data segment like a very static and converse to initialized time variable. Okay, and pointer will hello hold on the read write area and the value the data segment. So when you are defining something, this fellow, and when this is a constant, that means this is read only this thing, but this is which goes to the data segment. So that okay, so this and stack, as I told you, stack is like I told you, whenever you call a function, this abhi there is a function. You are calling a function from the main program. Right? This function you are calling. So when I am going from main program to my function call, मैंने कुछ define करके रखा है, मुझे वापस चाहिए. So when I come back, so then what will happen to these local variables? And मुझे return path चाहिए. मतलब वापस मुझे I want to exit. No? So I should be able to come back. So how this stack is operated? So that's what I said. Saved registers, local variables and all, and you see return address. The return address चाहिए. And as you keep on calling function के बाद वापस function call कर रहे हो, this will be keep on growing. Okay, क्योंकि आप एक function अब ये function से ये function में गए, ये function से दूसरा function गया, दूसरा function से तीसरा function गया, तो आपको वापस whenever you are switching a function, आपको वापस भी आना पड़ेगा ना, you have to come back. So that means उतने time आपको ये stack जो है आपको बढ़ते ही जा रहा है. Okay. अगर ये एक फंक्शन है उसको मैं 100 बार कॉल किया तो स्टैक ग्रो नहीं होगा, लेकिन ये एक फंक्शन दूसरा फंक्शन को कॉल कर रहा है, उसको दैट्स कॉल्ड रिकर्सिव प्रोसीजर. तो एक दूसरे को कॉल कर, दूसरा तीसरे को कॉल कर, दैट मींस स्टैक इज ग्रोइंग. अंडरस्टूड व्हाई स्टैक ग्रोस? It's not because how many times you have called the function. It is only because if the function is called on its own, another function, then stack grows. Okay, I know it is too early for you, but still थोड़ा आप ध्यान दे दो इसके ऊपर, and then we can always discuss anything. Okay, अगर यही चीज मैं assembly language पे लिखता हूँ, right? I am teaching now in second year. If I write the same thing, we don't use high level language. The same thing if I write in assembly language, मेरा program ऐसे ही रहता है, right? You see dot model small, dot stack, dot data, dot code, dot execute. Means what? मेरा program को वही कर रहा हूँ वापस. Dot model small means what is the size of the program? Means how many segment? What is the size of the segments? फिर stack इतना reserve करो stack के लिए, और मेरे पास कुछ variables है A B C X Y Z, वो data segment में जाना चाहिए. So I reserve data segment. फिर dot code मतलब मेरा program actual चालू हो रहा है. So I am saying dot code. फिर यहाँ से मेरा program start हो रहा है. फिर then exit and halt stop. और भी sections होते हैं, but these are minimum sections. Whenever I write any program, my program has to be divided into these many sections. That means memory organization. Understood? What in by program structure? Okay, so the same slide I explained through that code vision, right? This is what I said. Okay. In the compiler also, we can go for optimization. I can say what is my heap size, what is my RAM size, what is my data size. At least have you understood the terminology? Yes. That why it is so important to configure or to understand that how my project is created in embedded C or this single board computers, because ये सारे चीज है इधर भी एक्सेप्ट हार्ड डिस्क. अभी अपना केस में ये नहीं है. दैट इज अ चैलेंज. वी डू नॉट हैव हार्ड डिस्क. तो दैट इज अ बिगेस्ट चैलेंज नाउ. मतलब हर चीज अपने को यहाँ से मैनेज करना पड़ेगा.
सो वी हैव टू ऑर्गेनाइज, क्योंकि हर चीज छोटा है ना. अभी ये क्या, ये टेराबाइट्स में, टेराबाइट्स नहीं है अपने पास. एक्सेप्ट कंप्यूटर, नो वेयर यू हैव टीबी. दैट्स अ प्रॉब्लम. दैट्स व्हाई वी हैव टू थोड़ा अपने को ही प्लान करना पड़ेगा. मैं हीप को कितना दे रहा हूँ, स्टैक को कितना दे रहा हूँ, प्रोग्राम के लिए कितना स्पेस दे रहा हूँ, और वेरिएबल्स का टाइप्स. ठीक है, मैं इंटीजर यूज कर रहा हूँ क्या, साइंड इंटीजर यूज कर रहा हूँ, फ्लोटिंग पॉइंट यूज कर रहा हूँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है. आपके वो मेमोरी खा जा रहा है, वो ऑक्यूपाई कर रहा है वो मेमोरी को. यू शुड वरी कि अननेसेसरली जब आप डिफाइन करते हो सकता है कि आपका खत्म हो जाएगा, फिर देन वो नहीं बैठेगा आपका कोड, तो आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा. सो ऑप्टिमाइजेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट in this case. Okay, so let's stop here now, and I'm here till 7-8 o'clock. If you are interested in coming, those girls also there. किसी को soldering करना है या testing भी करना है, you can come back and do that. Okay, so any questions online?